And we're live. Hello, hello. अरे यार क्या हो गया इसको? Hello, hello, and welcome to A for Arsenal. Welcome to another live on this channel. भाई कैसे हैं आप लोग? अगर कोई है इधर, कोई नहीं भी है तो कोई बात नहीं. It's game week 17 and gonna talk about all the games, but more specifically Arsenal यार. I thought preview में वीडियो की जगह let's अब प्रीमियर लीग वापस आ ही गया है. Let's actually talk about all of this काफी विस्तार में. I'll get to interact with you guys and everything, so it'll be nice. um huge weekend for all of us, man. Arsenal are finally back. I'm happy. Arsenal are back और ऐसा लग रहा है कि भाई इतना टाइम हो गया आर्सेनल को खेलते हुए देखते. आई मीन फ्रेंडलीज में खेलते हुए देखा था आर्सेनल को, बट फ्रेंडलीज की इंटेंसिटी अलग होती है एंड यार प्रीमियर लीग की इंटेंसिटी बहुत ही अलग होती है. हे पार्थ, हाउ आर यू ब्रो? वेलकम टू द लाइव. आई होप एवरीथिंग्स गुड. मेरी क्रिसमस टू एवरीबॉडी. So in this live we are going to talk about Arsenal versus West Ham. We're going to talk about um, potential lineups, potential difficulties, how West Ham play, how Arsenal can break West Ham down, and essentially what it means, because और भी fixtures देखेंगे हम थोड़े से. um, तो comments हैं. Hey Mohammed, how are you? Hey Renisu, big up. How was your birthday, bro? I hope you had fun. Merry Christmas, Manash. Nice to see Manash here as well. Wiki United, Merry Christmas. Aditya, hi Aditya, how are you? So, कैसा लग रहा है रिटर्न ऑफ द प्रीमियर लीग? डिड यू गाइस मिस क्लब फुटबॉल? भाई मेरे को तो बहुत 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 मिस कर रहा है मैंने तो क्लब फुटबॉल को. पोटेंशियल साइनिंग्स एंड ऑल, हाँ यार, we'll talk about that as well, because दैट उसमें भी काफ़ी सारी प्रोग्रेस हुई, काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई हैं. एक सेकंड, मैं बैनर थोड़ा अपडेट कर देता हूँ. बट फर्स्ट, बिफोर साइनिंग्स एंड एवरीथिंग, विल टॉक अबाउट आर्सेनल वर्सेस वेस्ट हैम. ओके. इसके लिए आई हैव ट्राइड टू कम अप विद समथिंग. आई फाउंड अ रियली इंटरेस्टिंग पोस्ट फॉर यू गाइस. मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. आई वेट. आई वेट टू सी कि क्या सीन है, मतलब कितने लोग आते हैं. वंस वी हैव लाइक अराउंड 15-16 स्टेबल पीपल, then we'll go into what the scene is. Because let's not be too callous about it. West Ham is a great team, but भाई आर्सेनल आ गई है. आर्सेनल ऑफ कोर्स थोड़े वरिंग इश्यूज हैं. चलो पहले मैच के बारे में बात करते हैं. ओके, दिस मैच इज गोइंग टू हैपन ऑन मंडे. इधर की मंडे मतलब उधर आपकी ट्यूसडे हो जाएगी. एंड 1:30 AM आई थिंक इंडिया टाइम पे होगा, यहाँ पे 8 बजे. सो इट्स अ गुड 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 टाइम फॉर मी टू वॉच दैट गेम. हैप्पी क्रिसमस, नॉट मेरी क्रिसमस, कोई बात नहीं भाई. कब है आर्सेनल का गेम? बैंग बैंग. आर्सेनल का गेम इज डब्लिन या यूके टाइम में 26 को 8 बजे. तो इसका मतलब कि इंडिया में अराउंड सुबह 1:30 बजे के आसपास होगा. वेस्ट हैम आर अंडर परफॉर्मिंग दिस सीजन. आई थिंक now you should, everyone should forget whatever form they had in the first half of the season. भाई वर्ल्ड कप आ चुका है, मोमेंटम ब्रेक हो चुका है, कुछ प्लेयर्स इंजर हो चुके हैं, कुछ प्लेयर्स रिफ्रेश्ड हैं. वेस्ट हैम के कुछ प्लेयर्स, आई थिंक एगवर्ड गया था, डेक्लिन राइस गया था वर्ल्ड कप में, बट ज्यादा प्लेयर्स आई डोंट थिंक वेस्ट हैम के गए हैं. सो ऐसा नहीं है कि जब वर्ल्ड कप चल रहा था हम तो बड़ा चिल मार के 3 गेम्स इन अ डे देख रहे थे. But these guys were on the training ground. David Moyes has obviously worked with these guys, and काफी interesting होने वाला है यार. So first things first, yeah, let's just look at slides नहीं, let's just look at कि भाई scene क्या है in terms of schedule. Okay, I hope आप लोगों को दिख रहा हो. So the first thing is ब्रेंटफोर्ड वर्सेस टॉटनम आर किकिंग अस ऑफ. ये सारा जीएमटी है, आप घबराइए मत. आपके इंडिया टाइम में 5.5 घंटे इसमें ऐड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा. पहली बात गाइस, लाइक ठोको. इफ यू हेट टॉटनम, प्रेस द लाइक बटन. एंड अगर आप लाइक दबाएंगे तो टॉटनम विल लूज एंड वी कैन ऑल हैव अ नाइस लाफ द डे आफ्टर क्रिसमस. There's Southampton and Brighton, again a very interesting game. Brighton में I don't think McAllister will be back, but a core of their players should be back, and De Zerbi ने I'm pretty sure इस टाइम पर काफ़ी सारी चीज़ें implement करेंगे. हम स्कोर predictions वगैरह सब करेंगे इन सब की, ठीक है.
Newcastle, Leicester. Now Leicester has been, जैसे Bang Bang ने कहा, West Ham have been underperforming. Leicester भी underperform कर रही है, but I think they might turn it around a little bit. Although I think this is a very favorable fixture for Newcastle. इस पूरे वीकेंड में आई थिंक 3 टीम्स के पास बहुत फेवरेबल फिक्सचर्स हैं। न्यूकासल, चेल्सी एंड आई थिंक यूनाइटेड। बाकी सारी टीम्स दूसरी टीम्स को गड़बड़ दे सकती है, राइट? क्रिस्टल पैलेस, फुलहम वेरी वेरी वेल मैच्ड है। एवर्टन, वुल्व्स, दैट्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस गेम। ये वाला काफी इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज उनाई एमरी इज गोइंग टू बी देयर। बोवन भी गया था। बोवन नहीं गया था यार, राजदीप, आई डोंट थिंक सो। किसका लिंक चाहिए भाई आपको, रेनिसू? एनीवेज, सो चेल्सी वर्सेस बॉर्नमथ, आई थिंक इट्स अ प्रीटी इजी गेम फॉर चेल्सी। आई थिंक अगर आपको कोई 3 टीम्स के साथ खेलना है, इट वुड हैव बीन चेल्सी, नॉटिंघम फॉरेस्ट और वन ऑफ वुल्व्स एंड एवर्टन। बाकी सारी टीम्स जो हैं यार, जो बॉक्सिंग डे पे खेल रही है, आई वुड नॉट फैंसी माई सेल्फ टू प्ले अगेंस्ट देम। जैसे सिटी लीड्स है नाउ। सिटी ऑब्वियसली अरेस्टेड हालैंड एंड एवरीथिंग मेक्स इट वेरी इजी फॉर सिटी। डे ब्रुयना, आपने कैराबा कप में भी देखा होगा सिटी ने क्या डिमोलिश किया था लिवरपूल को। आई मीन ऐसा नहीं कि फुल डिमोलिश हुआ था, लिवरपूल के पास चांसेस थे, बट आई थिंक नूनेज ने काफी सारे चांसेस वेस्ट करे। बट सिटी बीइंग सिटी मैन, they are through to the next round of the Carabao Cup, and I think they shouldn't have any trouble with Leeds. Same with United, yeah. Considering the players they have, I think United will also have an easy game against Nottingham. Of course, Nottingham ne Renisu, stream. I'll have you guys. I'll have some of you guys on a stream later, sometime else. एक proper हम अच्छे से stream करेंगे. But भाई मैंने जैसे कहा है, जैसे बिप्रा भी कह रहा है, like कर दो वीडियो को. If you like the video, then Spurs will lose and we can all laugh. Um, so let's talk about our game, right? Arsenal versus West Ham. Now, ये सारी चीजें छोड़ दो, win probability वगैरह वगैरह। हमारा फॉर्म हैज बीन अनडिफीटेड इन द लास्ट 5 गेम्स। ये वाला जो आई थिंक ड्रॉ था, आई थिंक वाज अगेंस्ट साउथहैम्पटन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। किसके अगेंस्ट ड्रॉ किया था हमने ये? खैर जो भी, अब तो लाइक आई सेड, अब जो सीजन है, it's you have to treat it like a new season. West Ham on the other hand have lost 4 out of the last 5, right? um, तो सबसे पहले न्यूज़ क्या है? फॉर आर्सेनल स्टार्टिंग 11, जो लास्ट क्लोज डोर फ्रेंडली हमने खेला था, जिसमें हम आई थिंक हार भी गए थे, आई थिंक Kieran Tierney has not played in that last friendly. Zinchenko hasn't played. Emil Smith Rowe को injury setback हो गया, so Emil Smith Rowe is also not there. हाँ, Renisu will talk about West Ham के भी क्या सीन है. So no Smith Rowe for sure. No Smith Rowe for sure. Tierney, I think he will play. Zinchenko, I don't think he'll play. Tomiyasu का अभी तक कोई सीन नहीं पता है. तो राइट बैक पे आई थिंक इट विल probably be Cedric. Goalkeeper Ramsdale has played. I don't know if Saliba has played. यार आप लोगों को क्या लगता है? Shouldn't Saliba be actually at the London Colony right now and um, training and playing? I mean, if it was me, I would be so happy if Saliba would be coming in and playing, right? अब अगर आप अम्बापे को देखो, अम्बापे ने हैट्रिक मारी वर्ल्ड कप फाइनल में, और उसके बाद ही वाज बैक ऑन वेडनेसडे ट्रेनिंग विद पीएसजी बिकॉज द मैन इज ऑन अ मिशन। तो यार मुझे लगता है कि आई डोंट नो व्हाई सलीबा इजंट हियर, and if he's not here, he's returned to full training, right? But I don't know if he's in the mental state to play or whatever, or maybe he should have returned early because उसने फ्रांस में ज्यादा नहीं खेला। Martinelli is also back. आज कल उसने एक Instagram story डाली थी about being in London, so that's also good news. He might be involved. Xhaka खेलेगा, Partey will be ready. Forward में Gabriel Jesus, as we all know, अरे यार हाँ मानस, जिन्नी को इतना इंजरी होता है, मैं वही कह रहा हूँ, जिनी इज लाइक दैट फुल मून जो हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार आपको अच्छे से दिखेगा, और मे बी इवन वर्स सोलर एक्लिप्स भाई आपको साल में 2-3 बार खेलता हुआ मिलेगा। इट्स सो वियर्ड, राइट? हमने जिंचेंको को लिया था टियर्नी के बैकअप के लिए, और टियर्नी इज हिज ओन बैकअप नाउ। वेरी स्ट्रेंज। लेफ्ट बैक इज अ ह्यूज इशू फॉर अस। गैब्रियल जेसूस, एज आई सेड, गैब्रियल जेसूस इज नॉट प्लेइंग बिकॉज उसको इंजरी हुई हुई है। अब ठीक है, अब लाइटिंग बेटर है बिकॉज गैब्रियल जेसूस को ऑफ कोर्स ही इज आउट फॉर 3 months एटलीस्ट। अभी तक कि खैर मिकेल आर्टेटा ने कोई टाइमलाइन तो नहीं दी है। एंड ऑफ कोर्स आवर मेन मैन, आवर डेंजर मैन, बुकायो साका एंड मार्टिन ओडेगार्ड, ऑफ कोर्स
will be playing. So this is the lineup. Now, what I will do is show you guys something really interesting that I found. Okay. कोई ऑडियो शॉडियो तो नहीं है. Entire screen. Now you will see my Streamlabs. ये Streamlabs कह रहा हूँ. आपको मेरा पूरा स्क्रीन दिखेगा. But that's just for a bit. Okay. Hold on. Okay. I hope आप लोगों को दिख रहा हो. Yes. आप लोगों को अब दिख रहा है. So this is how. अभी मैं comments नहीं देख पाऊंगा. So I'm just gonna talk for a bit. Okay. This is how West Ham will potentially line up. Okay. Um, there is Lucas Fabianski, as we all know. There is Thilo Kehrer, Craig Dawson, Angelo Agbona, Aaron Cresswell, who I think will be a danger man. Thomas Schuchek, Declan Rice. अब स्कमाका नहीं खेल रहा है, so I don't know who's going to play forward for West Ham. Benrahama है, Lucas Paqueta and Jared Bowen है. ठीक है? So usually West Ham set up in a 4-2-3-1. बट जब डिफेंस की बात आती है तो बोवेन कम्स बैक, बेनरामा कम्स बैक, एंड ये डेक्लिन राइस एंड थॉमस सूचेक दे आल्सो स्टार्ट एक्टिंग लाइक सेंटर बैक्स. उससे क्या होता है, ये कॉम्पैक्ट डिफेंस पे चले जाते हैं. एंड पकेटा एंड समाका या एंटोनियो में से यूजुअली कोई इस लाइन पे खेल रहा होता है, इधर खेल रहा होता है. सो इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट लो ब्लॉक ऑफ अ 4-4-2 दैट वेस्ट हैम गो इनटू व्हेन दे आर डिफेंडिंग. व्हेन दे आर अटैकिंग, दिस इज इट. बेनरामा इधर से बना लेते हैं रन्स, बोवेन इधर से कर लेते हैं, पकेटा फ्री रोम कर लेगा इसी ट्रायंगल के एरिया में. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अब मेरे को पता नहीं फॉरवर्ड कौन खेलेगा एसेंशियली, बट वेस्ट हैम आर वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन. दैट डज नॉट मीन दैट दे कांट बी ब्रोकन डाउन. ठीक है. अब इफ यू लुक एट हाउ आर्सेनल मैचेस अप अगेंस्ट वेस्ट हैम, एक काम करता हूँ, मैं साइड पे अपनी स्ट्रीम खोल लेता हूँ ताकि अगर कोई कमेंट्स हो तो वो मेरे को एक बार दिख जाए. हाँ, so if we see how Arsenal, कहाँ गया मेरा चैनल भाई? 1 second, guys. So if we see, yes, West Ham have conceded a lot of goals this season. Uh, those who are Tottenham fans, please don't dislike it. कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं. Even if you're a Tottenham fan and you dislike it, it's okay. भाई अब प्रीमियर लीग वापस आ गए. Now there's no time to be nice and everything. We always have to be now hating Tottenham. Why are you worrying? It will be a cakewalk for Arsenal. The reason I'm worrying, my friend, is the the biggest weakness for City is transitions and close control and players who are fluid and can throw a diagonal through ball. मैं अभी आपको दिखाऊंगा. वो हमारे पास प्लेयर्स अभी कम है. प्लस ये वर्ल्ड कप के बाद है, तो हमें पता नहीं कि प्लेयर्स का फॉर्म कैसा होगा, प्लेयर्स की फिटनेस कैसी होगी, प्लेयर्स की मेंटल कैपेसिटी कैसी होगी. You are talking about a pretty much well rested वेस्ट हैम. वेस्ट हैम में आई थिंक कैरर भी गया था, जर्मनी के लिए उसने खेला था. खैर, a pretty well rested West Ham versus a pretty tired Arsenal, right? So Arsenal usually when they attack in this 2-3-5 where Saliba and Gabriel are at the back. यहाँ पे वाइट पार्टे और टियरनी इन्वर्ट, वाइट एंड टियरनी इन्वर्ट करके एक 3 इन द मिडल कर लेते हैं विद पार्टे, एंड आगे हम 5 लोगों के साथ अटैक करते हैं. नाउ दिस इन टर्म्स ऑफ मैच अप, exactly, Rennie. So London derbies can never be a walk in the park. So it creates a 5v4, but Rice and Suchek भी इस backline में जुड़ जाते हैं, so it becomes very difficult. The good things are that sometimes अगर आप notes देखें तो West Ham are 18th in possession, so they let the other team have possession a lot more, right? They've only held the ball 44.4% of the time, and they allow their opponents the highest passing percentages. ठीक है. तो वेस्ट हैम इज अ टीम जो दूसरों को खेलने देती है, हाउएवर इट मे बी. बट वेस्ट हैम, आई डोंट थिंक, yes, they haven't conceded more than 2 goals in a context, and their expected goals against is only, I think, 4th or 5th best in the league. So that's what I'm saying, right? आर्सेनल के लिए ये मैचअप फेवरेबल इसलिए है बिकॉज वी कैन पास द बॉल. आर्सेनल के लिए मैचअप इसलिए अच्छा है बिकॉज वील हैव पोजेशन ऑफ द बॉल. बट हम उस पोजेशन से करेंगे क्या? क्योंकि जब वेस्ट हैम एक लो ब्लॉक में आ जाता है, ये सारे लोग इधर इस बॉक्स के अंदर आ जाएंगे और ये लोग इधर आ जाएंगे. बेन रहामा इधर से क्रिएट करेगा इधर, और बोवेन इधर आ जाएगा.
तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचते एक्सेप्ट बॉम्बिंग क्रॉसेस इनटू द बॉक्स। एंड अगर आपके पास डॉसन और ऑग्बोना जैसे लंबे प्लेयर्स हैं, उसमें आप सूचेक और राइस भी जोड़ दो, तो आपके क्रॉसेस नहीं होंगे। सो इस गेम में आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ आर्सेनल आर ट्राइंग अ लॉट ऑफ क्रॉसेस, बट वो काम नहीं करे। सो इन दैट सिनेरियो व्हाट शुड बी डन? ये था वेस्ट हैम का गेम अगेंस्ट, मैं टीम का नाम तो भूल गया, बट ये कॉन्फ्रेंस लीग में था। अगर आप देखें यही है, कॉम्पैक्टनेस तो इधर है। नाउ व्हाट दिस टीम डिड वाज दैट दिस प्लेयर जो आपको दिख रहा है जिसके पास बॉल है, ही मूव्ड ओवर टू दिस साइड टू क्रिएट एन ओवरलोड। जो ओवरलोड था या जो कॉम्पैक्टनेस है ब्लॉक की, उसको स्ट्रेच कर दिया। एक कॉम्पैक्ट ब्लॉक को ब्रेक करने का बेस्ट तरीका होता ही यही है दैट यू स्ट्रेच इट एज मच एज पॉसिबल। तो आप देखें कि एक साइड पे उन्होंने 4 प्लेयर से ओवरलोड कर लिया है और ये 4v3 या 4v2 सॉर्ट ऑफ सिचुएशन हो गई है। प्रॉब्लम अगर ये नंबर 24 जो यहाँ पे है, इफ ही कम्स इन टू जॉइन दिस, इट लीव्स अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर दिस पर्सन टू रन इन हियर, एंड देन जो अदर प्लेयर्स हैं, ये वाला प्लेयर मे बी आगे आ जाए या जो भी है। सो व्हाट दिस टीम डिड, दिस प्लेयर वेंट ओवर दिस साइड एंड काफी स्ट्रेच होगी वेस्ट हैम, उसकी वजह से ये बाकी तीनों प्लेयर्स इधर आ गए। सो वेस्ट हैम की कॉम्पैक्टनेस को ब्रेक करने का सबसे पहला तरीका यही है कि उस ब्लॉक को आप बहुत स्ट्रेच करो, ठीक है, एंड देन यू क्रिएट स्पेसेस व्हेन दैट ब्लॉक इज स्ट्रेच्ड। अगर आप कॉम्पैक्ट ब्लॉक के लिए, आर्सेनल नेवर गो फॉर क्रॉसेस एनीवे, एक्चुअली वी आर इन द टॉप 5 फॉर क्रॉसेस यार। um, ये गेम हमारे होम पे है, सो दैट्स आल्सो एन एडवांटेज, बट मुझे ये लगता है कि इस ब्लॉक को सबसे पहले स्ट्रेच करना है। अनदर वे यू कैन बीट वेस्ट हैम इज डायगोनल थ्रू बॉल्स। आर्सेनल जब वेस्ट हैम के अगेंस्ट लास्ट टाइम भी खेली थी, तो हमने एक सॉर्ट ऑफ डायगोनल थ्रू बॉल, व्हेन अ प्लेयर वाज मेकिंग अ डायगोनल रन और आप एक थ्रू बॉल कर लीजिए, ये सिटी ने भी किया था। बट इनके पास हालैंड है, हमारे पास जेसूस नहीं है, हमारे पास एंकेटिया। नाउ एंकेटिया इज पेसी, ही इज स्ट्रॉन्ग नाउ एज वेल, सो मे बी वी कैन रेप्लिकेट इट, बट उसकी फिनिशिंग इज नॉट दैट ग्रेट। अनदर ऑप्शन विल बी कि आप ओडेगार्ड माइट बी डूइंग समथिंग सिमिलर टू मार्टिनेली। जब स्मिथ रो ने गोल स्कोर किया था, स्मिथ रो ने भी ऐसे ही मारा था, मार्टिनेली ने जब गोल स्कोर किया था वेस्ट हैम के अगेंस्ट, हमने भी ऐसे ही मारा था। दिस इज द वल्नरेबिलिटी, बट आप ऐसी सिचुएशन तभी ला सकते हो when you win the ball back from West Ham and you move it along very quickly। तो आपकी ट्रांजिशन क्विक नहीं, रैपिड होने चाहिए, तो आपके तो नेक्स्ट लेवल के होने चाहिए भाई ट्रांजिशंस एसेंशियली, राइट? ओके, so these are some of the things that you can do to beat West Ham. All right. um so it's not going to be easy, एंड वेस्ट हैम की अगर आप इंजरी न्यूज सोचे तो स्कमाका नहीं है, 6'5" बंदा है, बहुत टॉल है। टॉल लोगों के साथ भी स्ट्रगल। एंटोनियो फिजिकल प्रेजेंस, वी स्ट्रगल विद हिम एज वेल। दोनों के दोनों नहीं है, सो दैट्स ऑल्सो डिसेंट, बट दे आर बीटेबल। हमने देखा सिटी ने कैसे डायगोनल रन्स बना के उनको बीट करा, हमने देखा कि हमने भी उनको एक बार ऐसे बीट करा हुआ है। अरे भाई लाइव कैसे कहाँ से आ गए? हेलो भाई एसी के क्लियर, हाउ आर यू ब्रो? भाई अगर आप लोगों को पता नहीं मैं लाइव हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब के साथ वो नोटिफिकेशन बेल भी डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा मैं कब लाइव आता हूँ। समटाइम्स मेरे पास बस टाइम हो जाता है कि आई कैन गो लाइव और आई कैन मेक अ वीडियो, एंड यूजुअली ये मेरे पास 3-4 घंटे का ही नोटिस होता है। तो मैं आप लोगों को, अच्छा वॉच अलोंग करना है या नहीं? आई थिंक वॉच अलोंग कर लेते हैं, राइट? इट्स नॉट दैट बैड अ डिसीजन टू वॉच अलोंग। द क्वेश्चन इज, आई होप मेरे इंटरनेट और मेरे को एक अच्छी सी स्ट्रीम मिल जाए जहाँ पे मैं वॉच अलोंग करूँ। नहीं भाई, आपने लास्ट टाइम आई शो स्पीड एमी मार्टिनेज के लिए पूछा था, जोसे साहब आई डोंट थिंक इज गोइंग टू बी गुड। आई थिंक उनाई सिमोन इज द बेस्ट फॉर यू। Jesus drops into the midfield and creates chances which relieves some of the pressure of Odegaard. Now, O's chance creation will be very vital. I think, Renisu, what we will do is, we'll do what that Europa League team did. हम लेफ्ट पे ओवरलोड क्रिएट करेंगे और हम साका को अकेला छोड़ देंगे, एंड वील हैव टू स्विच प्लेस वेरी क्विकली, सिंपली बिकॉज अगर आप उस ब्लॉक को जितना खींचेंगे उतना ही बीच में से स्पेसेस खाली होंगे, एंड आई थिंक साका की बॉल कैरिंग एबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ एंड उसकी फिनिशिंग, I think he is the key player for us in this game. I really, really hope Eddie gets a goal. I really hope Eddie gets a couple of goals, to be honest. But उतना मेरे को
उम्मीद नहीं है कि हम गैब्रियल जेसस वाली चीज़ें रेप्लिकेट कर पाएँगे एडी। नाउ एडी इज़ आल्सो प्रीटी डिसेंट फ्रॉम द लेफ्ट विंग। जब वो लेफ्ट विंग से खेलता है, तो समटाइम्स ही कैन कट इन एंड मार्टिनेली कैन स्विच विद हिम, ये भी थोड़े ट्रांज़िशंस हो सकते हैं, बट एडी इज़ नॉट गैब्रियल जेसस, ये तो हमें पता है। अरे नोटिफ़िकेशन तो आ गई इसलिए पूछा क्योंकि आप हमेशा संडे को लाइव आते हैं। या मैन, बट कल क्रिसमस है एंड आई थिंक एक बार प्रीव्यू तो करना ही चाहिए। मैंने सोचा एक वीडियो बना सकता हूँ मैं, बट यार वीडियो में वो इंटरैक्शन वाली मज़े नहीं आते। एडी कौन? एडी एंकेटिया, आवर ओनली रिकॉग्नाइज्ड स्ट्राइकर एट द क्लब राइट नाउ। Enzo Fernandez, yes, in 2023, but I don't think I show speed. He will be the only Manchester United will be the only club going after Enzo Fernandez. So, yeah, that is Arsenal versus West Ham. What do you think the score will be for this, guys? मेरे हिसाब से Arsenal versus West Ham is going to be a decent game, but I think we'll win 2-0. It's not going to be easy. I think 30-40 मिनट के लिए हम थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, getting back into fitness, getting back into shape, playing with each other again. Oh, you're a Man U fan. Okay, no problem, bhai. All fans are welcome. All fans are welcome. So, like I was saying, I think uh, for Arsenal, it should be a 2-0 win, but we'll struggle a bit initially. Um, भाई स्ट्राइकर तो चाहिए. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट हमारा स्ट्राइकर सिचुएशन क्या है. नाउ लास्ट टाइम आई हर्ड transfer wise 3-1 if Rob Holding plays and clean sheet if Saliba plays. Okay, fair enough. You think we'll score 3 goals? I think it'll be much closer than that. I think it may be 2-0. 1-0 won't also be surprising. If we absolutely demolish West Ham, I will be surprised and I'll be happy surprised. Um, I'm still considering कि watch along करना चाहिए या नहीं यार, but देखते हैं. Liverpool have pre-agreement with sorry. क्या लिवरपूल हैव प्री एग्रीमेंट विद एंजो अकॉर्डिंग टू मेनी सोर्सेज? यार कुछ नहीं लिखा हुआ है, बिकॉज ये नेगोशिएशन ऐसे नहीं होते कि आप क्लब को बोलते हमें ये प्लेयर चाहिए और क्लब बोलते ओके ले लो. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू कंसिडर यार. नेगोशिएशंस आप देखो, इवन दो वी कॉल इट द ट्रांसफर मार्केट, आप सब्जी लेने नहीं जा रहे हो कि आप शॉपकीपर को बोलो कि भाई मेरे को 1 किलो टमाटर दे दो और आपको 1 किलो टमाटर पकड़ा देगा. In situations when you're negotiating players, there's first of all, what does the player want? Agent fees is a huge thing. Arsenal का इनफैक्ट ये मार्टिनेली वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन इसलिए ही रुका हुआ है बिकॉज एजेंट फीस आई गेस अभी तक डिसाइड नहीं हो पाई है. सेम विद साका, सेम विद सलीबा. सलीबा का भी आई थिंक देयर हैव बीन सम पॉजिटिव न्यूज कि सलीबा के लिए हमने पैसे जो हैं, ही इज नॉट हैप्पी विद इट, ही वांट्स अ लिटिल मोर, हिज एटलीस्ट हिज एजेंट सेज ही वांट्स अ लिटिल मोर, एंड उसी में ही हो रहा है. द गुड पार्ट अबाउट दिस इज इफ यू वांट टू रियली लुक एट अ सिल्वर लाइनिंग, when you talk about Saliba, at least he is not outrightly refusing despite us paying him a lot of money. So the issue is money is the issue between Saliba and us. Um, Martinelli का कह रहे हैं कि he might go up to 200 to 250k per week with incentives and bonus, which I think is fair. इसका मतलब उसके बेस सैलरी अराउंड 170-180 के आसपास होगी. एंड आफ्टर दैट साका शुड ऑल्सो साइन. आई थिंक साका एंड मार्टिनेली का सबसे क्लियर है, बट उसका नहीं पता मुझे सलीबा का क्या होगा. बिहाइंड द सीन्स एमयूएससी सेड दे आर विलिंग टू पे एंजो फर्नांडिस टर्मिनेशन फी ऑफ, ये देखो इस सीजन तो नहीं आने वाला, एंड आई थिंक नेक्स्ट सीजन तक बहुत सारे क्लब्स इंटरेस्टेड होंगे. लेट्स ऑल्सो नॉट फॉरगेट गाइस कि यार कभी कभी प्लेयर्स को इंजरी हो जाती है एंड उसकी वजह से उनके you know, value goes down, the transfers get called off, anything can happen. Yeah, Enzo has joined Benfica, so can't leave. अरे Benfica से पहले भी, so you can only play for 2 clubs, so Renisu is right. भाई एक दिन jersey collection दिखाना if possible. Bipra, all my jerseys that I have are back home in India. इधर मैं इतने कपड़े नहीं ला पाया. एमिरेट्स के पहले ओनरशिप का क्या सीन था? Ownership का क्या सीन as in Emirates? See, Emirates is our stadium sponsor. They don't own us. They have a shirt sponsorship and stadium naming rights. उससे पहले we used to play in Highbury. ये एक community stadium था of local London people. And उससे पहले owners हमारे कौन थे?
Well, there were a lot of owners. Alisher Usmanov tha, Stan and Josh Kroenke were minority holders. I think English owners ही थे हमारे. Next season, Enzo and FDJ will be. I don't think United will go for FDJ. यार बहुत बहुत. I think FDJ has made it very clear that that he doesn't want to go to United. Doesn't want to leave Barcelona. You have to pay huge amounts to best youngsters to bind them, especially when we'll be in the Champions League, and that's true, yeah, Anisu. Um, so there is this question that if you start paying Martinelli 250k, how much will you end up paying him for the next contract extension? या तो आप वो करिए जो टॉड बोली कर रहा है कि 6-7 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं उनको बड़ी वेजेस पे, बिकॉज जैसे जैसे साल बढ़ते रहेंगे इन्फ्लेशन बढ़ेगा एंड क्लब्स विल इवेंचुअली अर्न मोर मनी, एंड उसकी वजह से यू कैन फाइनली चलो इट विल मेक सेंस इन द लॉन्ग टर्म. बट अगर आप 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो 250,000 दे रहे हो, तो फिर 3 साल बाद आपको वापस नेगोशिएट करना पड़ेगा और 250 का 310 हो जाएगा, 310 का फिर 360 हो जाएगा. तो देखते हैं यार. बट द थिंग इज वी आर इफ वी आर गोइंग टू बी इन द चैंपियंस लीग, इफ वी आर at the end of it, we have to show that we are ambitious. Then we have to do well in this transfer window, and we have to tie down our youngsters with long-term contract. Arsenal के current owners कौन है? Stan and Josh Kroenke. They are father and son. The son mostly takes care of the affairs of Arsenal, and they have this company called Kenway Sports Enterprises. Yeah, Kroenke Sports Enterprises. Kenway तो कोई और है. Kroenke Sports Enterprise. They own multiple sports teams like the Denver Nuggets, the LA Rams, एक दो और team है I think उनकी. Will you take? I don't think anybody will say no to McAllister. It's a question of who goes for McAllister. Do we need a player like McAllister? I would say so, yes. He will be great at Arsenal. But I think so many other players will be. And if we are going to spend so much money, जो हम बात करने वाले थे ट्रांसफर्स की, तो यार बहुत इंटरेस्टिंग होगा. सो अभी न्यूज़ आई है that from Duncan Castles that Arsenal are very advanced in the negotiations for João Felix, and we are going to try for a loan and then an option to buy if certain conditions are met. Now that loan fees is around 8 million. And now Duncan Castles is not a well-renowned Arsenal journalist, but Duncan Castles is almost the mouthpiece for Jorge Mendes clients. ठीक है, जब भी जॉर्गे मेंडेज या हॉर्गे मेंडेज आप जैसे उसका नाम लो, हॉर्गे मेंडेज जब भी अपने क्लाइंट्स के बारे में किसी को न्यूज़ देना चाहता है, डंकन कासल्स इज वन ऑफ दोस पीपल. एंड यूजुअली व्हाट व्हेन ही सेज दिस इट्स प्रीटी ट्रू. नाउ द प्रॉब्लम is Duncan Castles or Jorge Mendes doing this to put pressure on other clubs to pay the clause? Or Arsenal are genuinely in pole position to sign somebody like João Felix. Now, if we get João Felix and if we get Mikel Mudryk, because जो reputed journalist है Sam Dean, Charles Watts, I think Gunner blog ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, but the noises are कि Arsenal are going to be very serious in the transfer window. Arsenal are not going to hold back, and they don't want Gabriel Jesus की injury to derail um, title charge. Now, this loan deal for João Felix, um, I think is the best possible scenario simply because agar it doesn't work at Arsenal, we just don't have the option. We don't trigger the option to buy. Agar obligation to buy it, then it's a different story. But loan usually उतने risky नहीं होंगे. You can see how he works in the system. You can see how he works in the Premier League. Sometimes it can be a Danny Ceballos as a situation where it just doesn't work out, and sometimes it can be an Odegaard light of situation कि भाई एकदम perfect fit है. So yeah, जाओ Felix का देखना काफी interesting होगा, especially if this is true. All the rumors about Enzo are fake because Benfica want a bidding war. Of course, yeah, of course. Benfica have been known to sell their talents for such a huge sum. जाओ Felix खुद Benfica का है, वो भी 120 मिलियन में ऐसे कुछ गया था. भाई मैन्यू और आर्सेनल में ही स्ट्राइकर का अकाल है. मैन सिटी ही है बस जो हालैंड का वरदान है. अरे सिर्फ हालैंड नहीं भाई, इट्स आल्सो अबाउट जूलियन एल्वारेज है. अब तो कोल पाल्मर भी आ गया है. इवेंचुअली आई थिंक फिल फोर्डन विल बी अ सेंटर फॉरवर्ड एज वेल या फॉल्स नाइन टाइप्स. तो देखते हैं यार.
मार्टिनेली और एंकेटिया, आई थिंक एंकेटिया को इस गेम में तो चांस मिलेगा फॉर श्योर। आगे वाले गेम्स में देखना है कि जनवरी में हम क्या करते हैं। डू आई ट्रस्ट एंकेटिया? आई डोंट थिंक आई हैव एन ऑप्शन मैन। आई थिंक दिल से आई जेन्युइनली डू ट्रस्ट हिम, बट आई डोंट थिंक यू कैन विन अ टाइटल with Eddie Nketiah as striker. No disrespect to him. I really, really like Nketiah. Um, but the thing is, he's too young to lead an entire backline. And I think Nketiah छोड़ दो. अगर Nketiah injured होता और सिर्फ Gabriel Jesus होता, I'd still say the same thing, because आप टाइटल एक स्ट्राइकर के साथ तो नहीं जीत सकते। ये तो जेन्युइन बात है। अगर आप अभी हम यूरोपा लीग में खेलेंगे, प्रीमियर लीग में खेलेंगे, एफए कप में खेलेंगे। आप 3 कॉम्पिटिशन्स में एक स्ट्राइकर के साथ तो नहीं खेल सकते। ठीक है? सो वी डेफिनिटली नीड अ स्ट्राइकर। ये तो बात क्लियर होगी। अब डू वी गेट जाओ फेलिक्स एंड वी प्ले हिम एट स्ट्राइकर? डू वी मूव एंकेटिया, या डू वी गेट मुद्रिक एंड देन Martinelli and Nketiah are our strikers for the season? Shaka is 30, so we have to get an 8, but that's for the summer. But we have Fabio Vieira, we have Emil Smith Rowe. देखिए, I understand we want new players, um, but we also have some players who are injured or joining the squad, right? Fabio Vieira को हम नहीं भूल सकते. He's not had the most memorable, the explosive debut at Arsenal, but I think he's been fairly decent. Emil Smith Rowe, I think, will be perfect for that Xhaka role, but उसकी defensive qualities are a little suspect. बट वो देख लेंगे। ये तो हो गया है। मैकेलिस्टर इज नॉट सो गुड प्लेयर, ही इज अ टीम प्लेयर, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी वांट, मैन। We don't want individuals, we want somebody who can fit well into this team. Yes, United are also going for Felix. United is the other English club that is in for Felix. Jao Felix would cost around 120 million. Arsenal will have to pay a huge amount. Dekhte hain, man. If it's a loan, I don't think it's any risk. If it's a loan, then it's good for us. और भाई ओए होए 1 MEFC इन द चैट। मोहक भाई आपको आना है? तो आपको मैं भेज देता हूँ लिंक एंड ऑल। लिख दो यहाँ पे अगर आप हो तो। खैर, जाओ फेलिक्स ऑन लोन, मुद्रिक एंड अ मिडफील्डर कैसे? आई डोंट थिंक ब्राइटन से, यार देखो, जो भी कोई टॉप हाफ में है या जो भी कोई रेलेगेशन के पास है, उनसे तो नहीं मिलने वाला आपको। जो टीम्स यूरोप के लिए compete करेंगी और आर क्लोज टू दैट यूरोपियन प्लेस, दे विल नॉट सेल। अगर आपको चाहिए तो आपको कोई 13th टीम या 14th टीम, अरे यार मोहक भाई बाहर है, आउट ऑफ स्टेशन। हाँ हाँ, फिर तो आप रिलैक्स करो यार, रिलैक्स करो। बॉक्सिंग डे पे हम मैच देखेंगे यार, दोनों। आपका भी गेम सेम टाइम पे है, हमारा भी सेम टाइम पे ही है। I don't think Caicedo will come. I don't think anybody who is fighting for a European place or close to relegation will sell their place. Your best bet is teams who are 15th to 11th or 10th. 10th भी मुश्किल से, simply because they have an opportunity to get at least into the conference league. खैर, मिडफील्डर का यार क्या ही सीन है। डनीलो, हमारा इंटरेस्ट कूल डाउन हो गया, so हम डनीलो तो नहीं ले रहे। जाओ फेलिक्स एंड मुद्रिक आर द मोस्ट लाइकली साइनिंग्स विल मेक इन जनवरी। भाई जाओ फेलिक्स मैन्यू में देखना चाहता हूँ मरने से पहले, प्लीज छोड़ दो उसे। भाई अगर आपको इतनी ही क्या कहते हैं उसको, डिजायर है देखने का, तो आप फीफा पे देख लीजिए। बट इफ ही कम्स टू आर्सेनल, आई विल बी वेरी हैप्पी, आई विल बी वेरी हैप्पी। बट दिस इज दैट फेज यार, वेयर आई वो नहीं होता, डोंट गिव मी होप, इट्स द होप दैट किल्स यू। आई विल बी सो डिसअपॉइंटेड अगर वो इवेंचुअली मैन यूनाइटेड चला गया। एंड आई एम होपिंग कि before he decides to move, he's asking his compatriots, his Portuguese teammates कि भाई कहाँ जाना चाहिए? And Cedric gives a very glowing review for Arsenal. By the way, Cedric might leave Arsenal this January, which I think is an absolutely insane decision. And he asked Cristiano Ronaldo, should I go to United? And Cristiano says, नहीं, अभी मत जा। बहुत बहुत weird environment है। नहीं, I'm kidding यार। Cristiano, I don't think he'll ever say anything bad about United. And João Felix, of course, will be a topic of heavy competition between United and Arsenal. 1MEFC entered the chat, yes. मोहक भाई, दक्ष भाई को बोलो जाओ फेलिक्स के आर्सेनल में आने की बात ना करें, मैन्यू चाहिए। अरे अरे, मुझसे खुद बात कर लो यार, डरने की क्या बात है। Ivan Toney, I'd love to have him, but I don't think he's moving. एंड अब थॉमस फ्रैंक ने भी 2027 तक कमिट कर लिया है, तो यार नहीं होगा। एटलीस्ट इस सीजन तो नहीं होगा फॉर श्योर। ओके, मैकेलिस्टर के लिंक्स आ रहे थे आर्सेनल से। यार मैकेलिस्टर अभी देखो, ये ना
अगर आप इफ एनी ऑफ यू वर देयर अराउंड द लास्ट वर्ल्ड कप, देयर वाज़ दिस प्लेयर, हमें आपको पता ही होगा, हर्विंग लज़ानो है उनका नाम, मेक्सिकन है, प्लेज़ इन द सीरी आ राइट नाउ। हर्विंग लज़ानो के लिंक्स चेल्सी, यूनाइटेड, आर्सेनल, मिलान, पता नहीं कहाँ-कहाँ, एनी प्लेयर हू हैज़ एन अमेजिंग वर्ल्ड कप ना, और एटलीस्ट अ वेरी डिसेंट वर्ल्ड कप, उनकी तो लिंकेज होती है। आप देखेंगे फर्नांडिस के साथ हो रही है, आप देखोगे उनाही की हो रही है, आप देखोगे बहुत सारे प्लेयर्स जिनका अच्छा वर्ल्ड कप गया था, दे विल बी लिंक्ड टू बिग बिग टीम्स। Palinia, we're not really linked though. I think if Fulham are closer to relegation, they might sell Palinia and then we can see what happens. Although I think Palinia भी इसी season move करा है, so I don't think he'll move right now. No team can match the depth of City. Arsenal is second, they are good. I don't think Arsenal have depth. I think if you want depth, I'll tell you who have good depth. I think City has the best depth, followed by I think Chelsea. Now, of course, Ben Chilwell injured था और रीस जेम्स इंजर्ड था, बट आई थिंक उनकी काफ़ी 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 सारे अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास। लेट्स नॉट फॉरगेट उनकी यूथ अकेडमी इतनी बेटर है, आई थिंक बेस्ट इन द कंट्री है, चेल्सीज यूथ अकेडमी एट कॉबम। सो चेल्सी आई थिंक हैव अ गुड डेप्थ। आई थिंक वो भी, I think it's not that difficult or stupid to imagine that they will eventually sign Arsenal youngster Ethan Van Eri, जो हमारा 15 साल का लड़का है, who made that debut, the youngest player. I think he'll also go to Chelsea. चार्ली पटीनो का हमने कॉन्ट्रैक्ट आई गेस रिन्यू कर लिया, सो दैट्स गुड। अगर रिव्यूज ले लिया फेलो पोर्चुगीज से तो मैन्यू लिस्ट से बाहर हो जाएगी। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आई एम होपिंग दैट समथिंग लाइक दैट हैपेंस, बट ओनली बिकॉज आई एम एन आर्सेनल फैन। देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ, इफ यू वॉच मोहक भाई, इफ यू वॉच मी, इफ यू वॉच एनीबॉडी, राइट, अब जो सारे वर्ल्ड कप के टाइम हम सब न्यूट्रल की तरह देख रहे थे, आई मीन वी गॉट एक्साइटेड फॉर गोल्स, वी वर नाइस टू ईच अदर एंड एवरीथिंग, अब वो थोड़ा बैंटर आ जाएगा, अब थोड़ी वो राइवलरी आ जाएगी, एटलीस्ट मी एंड मोहक भाई में तो थोड़ी बहुत आ ही जाएगी। वी विल ऑब्वियसली बी फ्रेंड्स, बट आई विल बी हैप्पी व्हेन यूनाइटेड लूज आउट ऑन अ प्लेयर और दे लूज अ गेम। ही विल बी हैप्पी व्हेन आर्सेनल स्लिप डाउन। आई थिंक सब लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं ना, राइट? आप लोग इतने सारे चैट में यूनाइटेड फैंस हैं, यू आरंट यू लाइक सीक्रेटली होपिंग दैट आर्सेनल कोलैप्सेस? क्योंकि मैं तो यार देखो, थोड़ा डर तो आर्सेनल फैंस को भी है, बट आई थिंक विल बी फाइन। But I think so many fans are just waiting for Arsenal to collapse, man. So many fans. Um, Tony might get banned too. हाँ यार, उसका कुछ betting scandal है ना, देखते हैं उसका भी क्या सीन है, बट वो अगर हम लेंगे भी तो ड्यू डिलिजेंस के साथ करेंगे। ओके, कोडी गैक्पो एज जेसस रिप्लेसमेंट, आई थिंक आज ही न्यूज आई है दैट यूनाइटेड हैव स्टार्टेड नेगोशिएशंस विद गैक्पो। सो इसके ऊपर तो टेन हाग के पंजे पूरे लग चुके हैं, so I don't think he's going to go anywhere except United. He loves linking with the old boss. You know, अभी जैसे लिसांड्रो मार्टिनेज ने भी बोला था, he called Ten Hag and said कि boss, I can sign for Arsenal. I mean, honestly, what a signing he would have been. Boss, I can sign for Arsenal, but if you want me to come to United, I can come. And वो आ गया, उसने आर्सेनल को स्नब कर दिया एंड भाई हो गया। Disciplinary with Tony, yeah, maybe. If Newcastle manages to finish top four, they would break the transfer market. Yeah, I think, like I said multiple times, if Newcastle end up in top four, I don't think they'll leave it. They'll just be like City. जब से वो Champions League में गए, I don't think they've left it consistently. Need a proper number 10. Mudrik is a winger. अरे, we have tens, man. We have Smith Rowe who can play 10. We have Odegaard, of course. Fabio Vieira can also play 10. हमारे पास 10 के हैं काफी लोग। हाँ, proper 9, yes. You need a proper 9, that's true. So let's see, man. I think hopeful I जैसे जो वाइब्स आ रही हैं, जो न्यूज़ आ रही है, इट लुक्स लाइक वील गेट अ स्ट्राइकर। बट ये हमने लास्ट जनवरी में भी देखा था। लास्ट जनवरी में भी वी नीड द राइट प्लेयर, वी नीड दिस, वी नीड दैट, ये होना था, वो होना था, एंड वी गॉट नोबडी एंड वी कोलैप्स्ड एंड वी वेंट आउट ऑफ टॉप 4. नाउ will we win the title even if we sign a striker? I don't think so, but our chances would definitely increase. It will definitely solidify top 4. यार देखो, अगर एंकेटिया को इंजरी हो गई ना एंड ऑफ जनवरी या फरवरी में और हमने कोई प्लेयर साइन नहीं किया है, फिर लग जाएंगे हमारे, बहुत बुरे लग जाएंगे।
um, दो इंजरी पूरी सीजन डिरेल कर लेती है, दैट इज नॉट गुड. Linked with Ferran Torres, I don't know how I feel about that link. I think yeah, Ferran is done with England. I don't know if when this link was. मैंने तो नहीं देखा to be honest. Um, but I don't think Ferran Torres is going to return to England. To be honest, I see Arsenal winning because I can't watch City win again, and I think that's what it is, right? Unless your team is in contention for the title, which to be honest, in 2 months it can be. Anything can happen, यार. आधे season में Arsenal top पे है. Who knows, towards the end of the season we might be fighting just for top 4, and it could be a very big capitulation for us. And ho sakta hai United rise up, City rise up, and God forbid Spurs also rise up, right? So all of these things are possible. And guys, if you haven't liked it, please like the stream. I'd very much appreciate it. um all you 20 people who are watching, it's great. It's nice to see व्यूइंग 8 से जाके 9 से जाके 10 12 14 18 20 हो जाती है. It's very nice. So please like the stream if you haven't, and of course get in the chat, man. I love interactive chats. I love streams like this. So I think the thing is, nobody wants City to win. Or if you're an Arsenal ka rival like Spurs or maybe even Chelsea, uh, it's just ki if you don't want Arsenal to win, then you want City to win, because then you can be like, हाँ इनके पास पैसा है, they're oil money, oil owned, so they can. Eh, फर्क नहीं पड़ता. Like nobody takes City's win seriously anymore because they are just so good, right? And I think if you're a neutral, or if you don't have too much ill will against Arsenal, you don't mind, you'd love to see Arsenal win because young team. Hi Aditya, how are you? Nice to see you. Um, you want to see a young team win. You want to see a club जिसने, by the way, we have spent a lot of money, but we've not spent absurd amounts of money. हमारे players young है. Like, let's not forget, Arsenal are the youngest squad in the Premier League. And if we win the Premier League, it'll be an overachievement. It's not an achievement, it's an overachievement. I think achievement will be a top 3 finish. Um, this is the best chance for Arsenal to win the league. Otherwise, back to being banter club next season, as Chelsea, Man U will leapfrog with new signings. I think, see, फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा. वी कांट रियली से व्हाट हैपेंस. इसको इस पे बात करते हैं मृदुल. हाँ, सो अबाउट दिस मैन, देखो, नेक्स्ट सीजन तो सब लोग स्ट्रेंथन करेंगे ही करेंगे. आई थिंक आर्सेनल विल आल्सो स्ट्रेंथन. या ब्रो, हैव ac clear, please. Have a good study session and good luck. And if you haven't liked the video, please like the video. But दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, राइट? कि यार, सिटी को आप पैसे उनका डिस्कार्ड कर दो. आर्सेनल अगर जीतेगी तो यंगेस्ट स्क्वाड है. एंड आई थिंक जो हम बात कर रहे थे कि नेक्स्ट सीजन क्या होगा, नेक्स्ट सीजन कुछ भी हो सकता है यार. नेक्स्ट सीजन न्यूकासल सबको लीपफ्रॉग कर देगी. क्या करोगे? हम हाथ में लेके खड़ा बस खड़े रहेंगे और कुछ नहीं, राइट? न्यूकासल विल बी स्ट्रेंथनिंग, सिटी विल ऑब्वियसली बी स्ट्रेंथनिंग, यूनाइटेड विल बी स्ट्रेंथनिंग. यूनाइटेड की प्रोसेस खुद की चल रही है भाई, इतनी बढ़िया प्रोसेस चल रही है यूनाइटेड की. आई एम सो हैप्पी टू सी दैट. Chelsea, of course, Todd Bowley तो सबको ही खरीद रहा है. So Chelsea will be strengthening. Spurs, I'm assuming with Conte, if Conte stays, then Conte will obviously ask their owners to spend money. और कौन बचा? लिवरपूल, ऑफ कोर्स. लिवरपूल की यार क्वालिटी ही है. उनको इंजरीज इस बार इतना सता गई, तो लिवरपूल भी अच्छी है. तो ऐसे बोलने में तो कोई भी टीम कुछ भी चली जाती है. देखो, इस सीजन की बिगनिंग में मेरे को 4th लग रहा था, बट if you're close to winning a title, now you can convince so many players to come join Arsenal, because you see there is a pathway for young players to be constant starters, जो उनके career के लिए बहुत important होता है. And it hurts to say this, but Arsenal पे the pressure to deliver, at least recently तक इतना ज़्यादा नहीं है. Now I don't know मिकेल आर्टेटा की demands कितने ज़्यादा हैं and अब क्या scene है, but maybe. But you're right, this is our best chance, at least for this season. Who knows, maybe how summer goes, वो देखना पड़ेगा. Who comes out on top and who has the best chance to show up. Okay, Daksh bhai, would love to see you collab a lot more with the big guns of the Indian community. Everyone crossed 100k. You can possibly end with 10k at the end of the season. देखो मृदुल भाई, numbers of course are always good.
And I will not be fake humble जो कहते कि यार मेरे को तो numbers नहीं चाहिए हैं. I don't need this, I don't need that. But my circumstances are such. Circumstances being my schedule and my timing. अब आप देखिए, मेरे को अगर किसी के साथ कोलैब करना है यहाँ के 5 बजे, उधर इंडिया में 10:30 बज रहे होते हैं, ठीक है? 6 बजे 7 बजे इज़ द आइडियल टाइम फॉर मी टू कोलैब बिकॉज़ तब मेरी जॉब का शिफ्ट खत्म हो जाता है, आई कैन वाइंड अप माय पढ़ाई, 7 ओ क्लॉक आई कैन कोलैब, बट 11:30-12 बजे तक पहली बात आप लोग उठे नहीं होंगे हर दिन, तो आई कांट गो लाइव ऑन देम। सेकंड थिंग इज़ अम, अगर मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, समटाइम्स दे डोंट हैव द टाइम। अगर आप देखें निधि भाई, मानस भाई, देखो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी कोलैब नहीं कर रहा हूँ, आई कीप टॉकिंग टू दीज़ गाइज़ ऑलमोस्ट एवरी फ्यू डेज़। ये जो फिटनेस चैलेंज है, अगर इफ यू आर नॉट अवेयर मृदुल, there's a fitness challenge that all like 6 of us are doing, and we talk almost every day. Um, but it's honestly just the circumstances which keep me back. I can't sacrifice पढ़ाई, I can't sacrifice work. I want to honestly do YouTube as well. अपनी health पे भी करना ही है काम. So all of these things take a lot of time out of my day यार. तो थोड़ा बहुत हो जाता है. But of course, point well taken. I'll still collab as much as possible. World Cup में आप देख रहे होगे कि at least in the initial phases में संबित पात्रा की तरह हर किसी की स्ट्रीम पे जा रहा था. So that was good and काफ़ी सारी growth मिली. But man, organic growth for me is good, but I will not never be fake humble कि मुझे numbers नहीं चाहिए. I want more subs, I want more likes. I am learning how to make it better. चाहे setup हो, चाहे light quality हो, चाहे ऐसा mic हो. I am trying to make it better for everyone. But thank you so much, Mridul. Okay, if I'm not a United fan, I really want Arsenal to win, and that's true, man. I think if I was an Arsenal fan and we were in United's place and it was a choice between United and City, राइवलरी थोड़ा हटा के, आई मीन ऑफ कोर्स थोड़ा बुरा लगेगा कि फक मैन फिर से यूनाइटेड फैंस बड़े स्मग हो गए, बट आई स्टिल वांट यूनाइटेड टू विन बिकॉज दे आर डूइंग इट वेल after a long time. A giant is waking up. It's always good for the Premier League to have more competition. Okay, um finally some relief from work. Are good yaar Aditya, can't wait for club football and Jan transfer window. It's going to be huge bhai Aditya, बहुत मजे आने वाले हैं बिकॉज क्लब फुटबॉल इज बैक एंड वो जो क्लब फुटबॉल के साथ जो इमोशन होता है, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट. थैंक्स यार एसी की क्लियर, आई होप यू हैव अ गुड स्टडी सेशन. ओके, being a United friend, I just want Bukayo Saka and Martinelli to be out of form for at least one match, and that is against United. I think this game against United, when Arsenal play, no, January में ही है game. I would have loved to play United, Gabriel Jesus again, Saka and Martinelli, all of them fit. No, a full strength United versus a full strength Arsenal would be amazing to watch. वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाएगा. एंड पता नहीं जनवरी में हम दोनों के स्क्वाड्स कैसे देखेंगे. यू माइट गेट गैक्पो, वी माइट गेट मुद्रिक, वी माइट गेट जाओ फिलिक्स, यू माइट गेट जाओ फिलिक्स. तो अभिषेक, it's going to be a huge game. And likewise, I hope Anthony is out of form. I hope Rashford is out of form. I hope Lisandro and Varane are out of form. I hope De Gea is out of form. देखो, as an Arsenal fan, you have to respect United because these are historic rivals. हम local rivals नहीं, हम historic rivals हैं. And historic rivalry का flavor ही अलग होता है because you've both been successful clubs. So when you have to face a historic rival, there are so many emotions. You want to see the other players miss out. Of course, you never wish an injury to anybody. That's something I never do, even if it's a Spurs player. But historic rivalries, man. I can't wait for United and Arsenal to play again. Liverpool may also get a new owner. Imagine Klopp with oil money. Uh, I don't know, man. See, the Liverpool wala thing is, it's true they'll have new owners. इस पे तो कोई बात है नहीं. But how much of that, you know, um, player recruitment was to Michael Edwards and how much was it Klopp? देखो, हर क्लॉप साइनिंग अच्छी नहीं है. क्लॉप वाज प्रीटी मच वैट्सके के साथ एंड जो और उनका सीईओ है डॉर्टमुंड का, क्लॉप हैड अ मेजर से इन डॉर्टमुंड साइनिंग्स एंड हर डॉर्टमुंड साइनिंग नहीं चली. डू यू रिमेंबर एड्रियन रामोस? आई थिंक उन्होंने जैक्सन मार्टिनेज भी साइन किया था. नहीं, जैक्सन मार्टिनेज नहीं किया था. एड्रियन रामोस आपको याद है? अब वो डीजेइंग करता है. सो या वो जैक्सन मार्टिनेज था, खैर याद नहीं. हर डॉर्टमुंड साइनिंग वाजंट गुड एंड आई थिंक माइकल एडवर्ड्स का ह्यूज रोल था लिवरपूल प्लेयर रिक्रूटमेंट में. Godzilla, hello Daksh bro. I'm aware a good initiative. I must, yes Mridul, of course.
It's going to be Arsenal's year, and since you're the only Arsenal fan in the community, you might get a lot of audience for your opinions. Yeah, man. Uh, I think I'm lucky in the sense, Mridul, that I decided to start the channel. और ये channel मैंने season start होने से पहले किया था. That Arsenal decided to show up for the season. It's just I've not been able to leverage all that attention. But आएगा, आएगा, धीरे धीरे आएगा. ये सर कब तक आएगा? यार honestly पता नहीं. Mikel said that he has some setback. तो अब यार ये इसके little setback है या क्या है? I think अभी तक ट्रेनिंग में तो नहीं दिखा है मुझे. उसने आर्सेनल के साथ मीडिया ड्यूटीज तो करी, सो दैट्स ओके. मे बी 2-3 हफ्ते शायद से. वन डे 1 से 2 के वॉचिंग आएगी. 1 से 2 के वॉचिंग दो सिनारियोस में आएगी. अगर आर्सेनल फॉल आउट ऑफ टॉप 4 एंड आई हैव अ मेल्टडाउन ऑन लाइफ, और आर्सेनल विन द लीग, देन आई विल बी full party, bro. Full party. Daksh, bro, Jao Felix in January. What so you think about this, buddy? Godsima, I would love Jao Felix, especially if it's alone, because that makes it very, very risk free. Now, of course, there are some risks with it. Like I said, it can be a Danny Ceballos situation or it can be an Odegaard situation. So a loan would ideally be good. Otherwise, we might get Mudryk only and we move Martinelli to centre forward. That's what my feeling is. Nketiah up front versus West Ham, not at all confident with their attack, but I hope he does well. Gulasso, the thing is यार, आप उसको वेस्ट हैम में नहीं खिलाओगे तो कब खिलाओगे, राइट? हमारे आगे वाले गेम्स न्यूकासल है, ब्राइटन है, सॉरी ब्राइटन, न्यूकासल, यूनाइटेड, स्पर्स, इनमें से आप किस में खिलाओगे फिर उसको? देखो, वी द अगेन वी कैन नेवर प्रेडिक्ट व्हाट हैपेंस. ऑल वी कैन होप फॉर इज जो सेकंड हाफ ऑफ लास्ट सीजन में जो एडी एंकेटिया आया था, हु रिप्लेस्ड लाकाजेट, हु स्कोर्ड गोल्स अगेंस्ट चेल्सी, was great. I think that will be good. Unfortunately, रीस नेल्सन को भी इंजरी हो गई, तो राइट विंग भी हमारा थोड़ा वीक हो गया है. um, देखना पड़ेगा यार. अभी a lot of players will have to do a lot of things in positions they're not familiar with. So Fabio Vieira, he might have to play left wing, he might have to play right wing, he might have to play 10 if God forbid ओडेगार्ड को इंजरी होगी. आपने सोचा अगर ओडेगार्ड को इंजरी होगी हमारा नंबर 10 कौन बनेगा? फाबियो वियरा. और अगर गॉड फॉरबिड ओडेगार्ड एंड साका गेट इंजर्ड, फिर भाई, so the situation is very precarious and it's not too simple, which is why, like I said, Cedric को बेचना is a mistake, man. टॉमियासु खुद इंजर्ड रहता है. बेन वाइट इज आवर ओनली recognized right back. Cedric है हमारा बैकअप. I don't know. Do you remember what Lisandro Martinez and Scott McTominay, what they did to Gabriel Jesus in Old Trafford? यार देखो, एक गेम में तो आप कुछ भी कह सकते हो. You can take any game of United and Arsenal, and I'm sure there will be a hero in that game. For example, if you've seen the recent report of the referees and VAR, उसमें था that foul जो आर्सेनल का गोल डिसअलाउ कर दिया गया था, it was not a foul, it was a wrongful call. एंड अगर आर्सेनल उस गेम में लीड ले लेती तो गेम का कम्प्लेक्शन ही डिफरेंट होता. फिर आपका लिजांड्रो मार्टिनेज ने ये किया, मैकटोमिने ने ये किया, वो बिल्कुल ही अलग होता. एंड like I said, bhai, in some game Rooney was the hero, in some game Henry was the hero, in some game Van Nistelrooy was the hero, in some game Alexis Sanchez was the hero for Arsenal, in some games Ozil was the hero, in some games Walcott was the hero. अब आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो. I'll be like, याद है Alexis Sanchez ने क्या किया था आपके साथ? तो यार ये सब तो चलता रहता है यार. लास्ट गेम में Lisandro had a good game, he might have another good game, but maybe he won't. So आप कुछ कह नहीं सकते. I always tensed before every match against top 6, but City मैच से पहले गांड फट जाता है. भाई, City वो टीम है, वो आपको ना, even if they're not playing great, they can still beat you 6-3 or 6-0 or 5-0 or whatever it is. मेरे को अभी भी याद है, थर्ड मैच लास्ट सीजन 5-0 हराया था उन्होंने हमें, पेल दिया था उन्होंने हमारा. Odegaard as a captain player is underrated, but what is there with him passing the ball in the box and not going for the shot? I think that is something um, that he's been naturally doing all his life. आप देखो नेशनल टीम में वो हालैंड होता है, आप हालैंड को कैसे बॉल नहीं दे सकते? मड्रिड में थोड़े टाइम जब वो एज कस्तिया में खेला होगा, उसको मे बी दैट वाज द ट्रेनिंग. सोसिएडाड में had Alexander Isak and everyone. So I think he's always had good finishers up top and he's always just drilled it into himself कि I should pass whenever there's a pass. नंबर 10 की होती ही यही है, ओजिल भी यही करता था. बट अब आप देख रहे हो, he shoots more, he's scoring more goals. That is what we need from our number 10. बिल्कुल केविन डे ब्रुयने टाइप चाहिए our number 10. That's the mold that Odegaard should be, to be honest, planning for. When did Rashford come in from? यार
क्या बोल रहे हो? आपने उसका वर्ल्ड कप तो देखा ना मृदुल? He's been so good. I don't agree he's been out of form. I think United claim okay, it's not always been working, but वर्ल्ड कप में आप देखो कितना अच्छा खेला. अभी यह जो आपका कैराबाओ कप गेम था उसमें इतना अच्छा खेला बर्नली के अगेंस्ट. So I think Rashford is in form. Also, when are we going to see you don a Martinelli jersey? When I save enough money for a jersey, to be honest, my friend, jerseys here are very expensive. तो देखते हैं. Maybe next season, who knows? Daksh bhai, we are unit as a team, but according to you, who's the face of Arsenal? Every club has a face. Who do you think is the guy at Arsenal? I would say, okay, you can have faces in very different ways. In terms of a vocal leader, I would say Granit Xhaka is the face of Arsenal. In terms of who imbibes the values of the club the best, I would say it is Saka. In terms of who is the most prolific sort of guy जिसकी flair बहुत है, who stands out no matter when he plays, that could be between Saka and Martinelli again. If you say who is a great leader, then Xhaka and Odegaard. Uh, सो आई थिंक फेस आपके बहुत सारे हो सकते हैं. अगर आप मेरे को एग्जांपल दे कि लेट्स से यूनाइटेड का फेस ये है, रियल का फेस ये है, देन आई विल बी लाइक ओके ठीक है, आपका इस कंटेक्स्ट में मीनिंग है, देन दिस इज द फेस ऑफ आर्सेनल. Rashford in last year of contract. I think he'll extend. I think अभी सारे क्लब्स ना ये जो एक्सटेंशन होते हैं ना ट्रिगर कर लेंगे. जैसे हमने पटीनो का 2 साल का ट्रिगर कर लिया एक्सटेंशन. मार्टिनेली के भी आई थिंक 3 साल का एक्सटेंशन ट्रिगर कर सकते हैं, 2 साल का एक्सटेंशन ट्रिगर कर सकते हैं. Will I do a watch along? I am not sure. It is 8 o'clock and I want to enjoy my Arsenal by myself, at least for the first game back. I think for the bigger games we can do. देखते हैं man. I'll probably do a poll and let's see what the people say. If they say कि watch along कर लो, then उसके logistics figure out करके I'll do a watch along. Arsenal needs to win this game to maintain winning mentality. Bhai, I'm telling you, we are 5 points ahead of City. We have to keep that pace because City can go on a 16-game winning streak anytime at any point in the season. So yeah, Odegaard is a team player. I think for Arsenal, you can say that for any player. I don't think we have individual talent. I mean, we do have individual talent. Martinelli and Saka being very good examples of it. But I don't think ऐसा कोई टीम के ऊपर कोई ऐसा खेलता है. Alexis Sanchez, what an absolute beast that guy was. His work rate passion was immense. That's the vibes I get from Martinelli. And I hope, bhai, he doesn't suffer the same fate as Alexis because Alexis itna khela, itna bhaga, itna intensely khela कि यार he just never like his body broke down. But now it's nice to see him do decent at Inter and now at Marseille. Marseille में है ना I think. हाँ. Alexis Sanchez 2015 to 7. I think Alexis Sanchez was the best player at Arsenal in the Emirates era. जब से हम Emirates में move करे हैं, and any new signing, he was the best signing we've ever made at Arsenal. Alexis Sanchez. Goals, assists, dribbles, free kicks, everything. हाँ भाई, बंदा was a fucking animal. Felix can be a 10, Felix can be a 9, Felix can be a wingers. Felix is very important if we get him. He can play in all those three positions. But again, alone is the best for me. Arteta is the face of Arsenal. That is a very interesting point. Arteta is the face of Arsenal. I think he knows what it means to be at Arsenal. I think he knows what values Arsenal stands for, and he certainly can be a very good face. How are you? Hi, Siddhant. I'm good. How are you? I'm a United fan, but I like your videos and the way you present. P.S. Your oration is superb. Thanks, Siddhant. That is a very nice comment of you. Big up, Siddhant. Yeah. I hope you're having a good day and I hope you have a good Christmas and a very great New Year. Okay. Us fans, Emirates never died down, never did our way away fans, even in those dreadful years. Hi, yeah, I think, okay, Emirates kind of died down. I think Emirates became very toxic. Away fans have always been good. But अब जो ये वाले हमारे नए अल्ट्राज आए हैं, द ब्लैक ones, I think क्या है, क्लॉक क्या थे, Clock and Gooners, that's what their name is, I think, if I don't remember. Um, those guys have created an intense atmosphere for us. एक हमें sort of एक pseudo club anthem मिल गया है in terms of वो Dumford का North London Forever. You know, that plays before every game. Now, of course, it's not come organically like You Never Walk Alone जो Celtic में भी था और अब Liverpool में भी है, और A Glory Glory Man United. Um,
Or of course the famous Chelsea chant, Chelsea, 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 Chelsea. That's literally their chant. But hopefully in time, North London Forever can become a cult song for Arsenal, and I think that'll always be good for the atmosphere. Parley Catino linked with bottle owner. पार्ली कटीनो एंड चार्ली पटीनो दोनों दे वर लिंक्ड विद बार्सिलोना बट चार्ली पटीनो का हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया आई डोंट नो अबाउट पार्ली कटीनो भाई डिड यू वॉच 17-year-old academy player similar to Saka? Yes, ACD, Cozier Drewberry, Cozier Dewberry. Another good player coming up. I think hot take Renitsu, he will be sold. I don't think he'll make it to the team. And you know, sadly, where will he go? He'll go to Chelsea. And so will Ethan Maneri. हमारे पास इतने यंग प्लेयर्स हैं कि हम सबको टाइम नहीं दे पाएंगे. दैट इज अनफॉर्चुनेटली द ट्रूथ. सो ये जो ऐसे एसीडी जैसे प्लेयर्स हैं, वनेरी जैसे प्लेयर हैं, इनको 8-8 मिलियन में बेचना पड़ेगा. एंड ऑफ कोर्स सम टाइम इन द फ्यूचर दे विल बी वर्थ मे बी 15-20 मिलियन. बट दैट्स व्हाट यू यूज योर एकेडमी फॉर. यू ईदर सेल योर प्लेयर्स और यू इंटीग्रेट देम इनटू द फर्स्ट टीम. देखते हैं यार क्या होता है. ऑफ कोर्स आई नॉट लाइक एनीथिंग मोर देन हेल एंड पीपल वर्किंग एंड बीइंग इन द टीम. बट आप फिर करंट टीम से किसको निकालोगे? Can still be costly, of course. You as well. Love from Australia. Thank you so much, Siddhant. It must be wow. It must be night there right now, right? Kafi deep into the night. Unpopular opinion. Current season Thomas Partey is as good as Fabinho and Rodri. I think current season Thomas Partey is the best Thomas Partey we've ever seen at Arsenal. He's been decently fit. He's been scoring goals. He's been amazing. Come mistakes ki hain. And he's been a rock. And he's been very vital. I think Thomas Partey has been crucial to Arsenal season this time. Which makes it also very worrying कि भाई अगर उसको इंजरी होगी तो भाई क्या करेंगे हम लोग. ब्रो तुम्हारे हिसाब से हु इज द मोस्ट हैंडसम प्लेयर इन प्रीमियर लीग? इट यूज्ड टू बी जिरू. हैंडसम प्लेयर कौन है यार हैंडसम? आई वुड से बेन वाइट मैन. बेन वाइट इज वेरी हैंडसम. और आई डोंट नो और कौन. आप लोग बताइए भाई हु इज द मोस्ट हैंडसम. Have to sell a few youngsters. Yeah, Benny Blanco, man, of course. Harry Winks, lol. Harry Winks. Have to sell a few youngsters to improve the net spend too. हाँ यार. और unfortunately, I just hope we don't have to sell Smith Rowe, Martinelli, or Saka. But I won't be surprised if that's what it comes to eventually. Partey is better than Rodri and Fabinho at the moment. At the moment, yes. At the moment, yes. Rodri. Okay, maybe that City wala yaar. In that City team, Rodri is actually fucking fantastic, man. Dallo. Nahi, Dallo is not that great looking, man. Cancelo, okay, fine, maybe. Jack Grealish, yeah, Jack Grealish can be a decent looking guy. I think he's just too dumb, man. Uski jo stupidity hai na, that just takes over everything. Xhaka handsome. I think Xhaka is probably one of the most alpha people. Of course, in the Premier League. वो किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं हटता है. Nathan, कौन? Ake? You think Ake is handsome? Ake मेरे को हमेशा ऐसे फेस बनाते हुए दिखता है. Declan Rice, yeah, Declan is also decent. Yeah, Declan Rice is nice. You know, Kai Havertz used to look so good. फिर उसने अपने बाल कटवा लिए. Kai Havertz was so good with his hair. Mason Mount was also very decent with his hair. But उन दोनों ने कचरा कर दिया. Enzo looks good. Enzo अभी प्रीमियर लीग में नहीं है. देखते हैं कौन सी टीम के जाता है. Granit Xhaka is quite liked by the women all around the world. भाई मैं तो कुछ नहीं कह सकता. Okay guys, now let's please, अब बहुत सारे handsomeness की बात हो गई. Let's please move to the others. And Jose Sa, नहीं. Jose Sa I think hates me. And I'm not joking. I think Jose Sa genuinely just hates me. खैर छोड़ो, मैं किसी और टाइम बताऊंगा उसके बारे में. ओके, क्रोम टैब कहाँ गया भाई? यस, ऑलराइट गाइस, अब हम बात करते हैं. हाँ, अपने अपने प्रेडिक्शंस प्लीज लिखते जाइए, ठीक है? लेट्स रोल ऑन विद द प्रेडिक्शंस. ब्रेंटफोर्ड एंड टॉटनहम, क्या क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो आप लोग?
Ronaldo bloke from United. I don't know, man. There is no Ronaldo at United anymore. So, hmm. Brentford 3-0 says Golazo edits. Okay. Who else? Aisho Speed, Aditya, Abhishek, Renisu. What do you guys think? Brentford versus Tottenham. What's going to be scored? 2-1 says Renisu. Abhishek says 2-1 if Tony plays. All right. Godzilla says 2-0 shit. 2-0 Brentford. So you essentially want Spurs to lose, no? That is why I love you guys so much. You guys are the best. You guys are absolutely the best. Okay. By the way, I hope screen दिख रहा हो आप लोगों को. It's visible. नहीं दिख रहा तो I'll do something like this. Right. Okay. Southampton and Brighton. I think Brighton should win this one, right? Oh, Aditya says Spurs will win. Okay, Aditya, what's the score? Brentford winning till 89th minute by 2-0 and then Tottenham coming from Arey yaar. You know what? This is actually so plausible, Mridul. I'm not even joking. Renisu, yeah, visible, great. Brighton 3-1. I think Brighton will win this. I think Brighton will win this 2-1. 2-0 Southampton. Okay. What about Leicester and Newcastle? 4-0 Brighton says I show speed. I want to see a prediction for United then. Okay. Leicester versus Newcastle, guys. Leicester versus Newcastle, क्या सीन लग रहा है? Newcastle 2-1 Leicester. Abhishek says Brighton will win. Okay. And Abhishek also, did you also say? No, Aditya said Spurs will win. They sacked Hasenhuttl. Yes, they sacked Hasenhuttl. I don't know who they brought in, but I think कुछ लिया तो इन्होंने. Newcastle 2-0. I think Newcastle will win this 4-1 types. Newcastle काफी गोल पेलेगी इस पे. I think we will see Newcastle um, actually stamping their foot and being like, नहीं बहनचो हम यहीं पे हैं और हम यहीं रहेंगे. Newcastle 2-0, 4-2. Yeah, I think this is probably the most likely. But you never know, man. Brendan Rodgers has done funnier things in his life. Okay. Crystal Palace Fulham. ये वाला छोड़ दो यार. I honestly don't care, but I want Vieira's team to win. Everton Wolves. Again, I don't give a shit. Aston Villa and Liverpool. Aston Villa and Liverpool, guys. Fulham Mitrovic 2-1. Okay. Fulham 2-1. Fine. Aston Villa Liverpool. Abhishek, Golasso, Mridul, Almiron bowling in. Do you think he'll still be good, Mridul? Do you think Almiron will still be decent now that the Premier League's come back? I think for him the World Cup was a very bad time because yeah, Banda was on form. But yeah, देखो, if it is honestly genuinely the coaching of this guy, Eddie Howe, then it's fucking fantastic. Then तो बहुत ही बढ़िया है. 1-1 draw. Renisu, of course. You know, some people will call you crazy, but this has actually happened. It's insane. Bhai, and let's not forget, it is Mr. Good Evening. Going to कहाँ पे है ये गेम? ये तो विला पार्क में है ना? Yeah, it's Mr. Good Evening. So Aston Villa 2, Liverpool 3, Chelsea 0-1 Bournemouth. Okay. ये भी हम देखेंगे. इससे पहले भाई आर्सेनल का गेम भी है यार गुलासो. आर्सेनल का गेम भी है, उसके लिए भी तो कुछ कहना है. ओके. विला 2-2-2-2-3. आई थिंक लिवरपूल विल विन गाइस. क्या कर रहे हो? मतलब आई नो थोड़ा ट्रोलिंग होता ही है. Definitely man, Arsenal. Yeah, I think so too, man. But I'll be surprised. I'll be genuinely surprised if he continues the same form he has been in. Okay. Arsenal versus West Ham, guys. Arsenal versus West Ham. क्या prediction है आप लोगों की? Arsenal versus West Ham. If I can imagine, I think we'll go a goal down and then we'll end up winning 3-1. उसमें क्या prediction? Final जीतेंगे for sure. अरे बहुत ही बढ़िया भाई. बिल्कुल. No, yeah, I think it's going to be 3-1 or 2-1. 3-1, very poor first half in absolutely perfect Arsenal fashion. Absolutely dreadful first half, but 3-1. Yes, you said this, I remember. 3 West Ham 1. 1-1 Arsenal. I show speed. आप बहुत बुरे हैं, but I love you because you keep hanging in my stream and I love you for that. Guys, again, if you haven't liked the stream, please like the stream. It helps me out a lot. Okay.
फाइन, आई थिंक आर्सेनल की प्रेडिक्शंस आई गई हैं। चेल्सी बोर्नमथ, किसी ने बोला था 1-0 टू बोर्नमथ, गोलात्सो एडिट्स, 1-0 टू बोर्नमथ, 2-1 Arsenal, 2-0. Seriously, clean sheet need. हाँ यार, I think clean sheet is going to be huge for us as well. Saka, Martinelli, Gabriel with a towering header. You know, Godzilla, the funny thing is, Newcastle are the third best team when it comes to defending set pieces. They have not conceded a goal from set pieces this season. Clean sheet for Arsenal, West Ham woeful this season, and Bowen giving nothing. Yeah, I hope, Joseph, what you're saying is right. I really, really want Arsenal to win this very comfortably, but I think in true Arsenal fashion, we'll pretty much have a poor first half, and then we'll move forward into, actually getting into a stride after maybe like a half time. Renisu says 3-3 Chelsea, Bournemouth 3-1 to Arsenal, Chelsea 2-0, Reece James back. Oh, Reece James is back, yes. Yeah, then it's going to be good. Nil all draw. I'm assuming, Aditya, you're talking about Chelsea Bournemouth, right? Bournemouth don't concede and Chelsea don't score. So yeah, let's not forget, guys. I know एक बार जल्दी से देख लेते हैं. Bournemouth are 14. Oh, so they've lost their 4 games, huh? So Bournemouth aren't in good form. I think at one point of time they were above Liverpool at some point, right? Yeah, very strange, very strange. But Fulham, let's not also write off Fulham and Brighton. अगर हम table देख लें, Arsenal, City, Newcastle, very, very good for Newcastle. 5 wins on the trot, man. I think they'll make it 6. Tottenham as well. This was really, really surprising for me that City have actually lost 2 out of their 5. What happened to our defensive set pieces stat that we hadn't conceded from set pieces? We have conceded from set pieces now, but I think the best team to not concede from a set, we are, I think, second, and I think West Ham are third or fourth, something like that. Okay. Okay, Oish, I forgot to change this. Hold on. All right, Arsenal, West Ham done, Chelsea, Bournemouth done, United and Nottingham Forest. What do you think? United, of course, are going to be in good form. Okay, I think friendlies they've not done too well, but they have the players, they have the quality. In Carabao Cup, they showed up. Bruno did well, Rashford did well. Now there's Nottingham Forest, they've beaten Liverpool. And you just don't know, man. You just don't know. Sometimes Dean Henderson can just, realize that I'm playing against United and it's my day to shine, show them what they're missing out on. 4-0 Manchester United. Sue says I show speed. Rennie Sue says 1-0 to Forest. No Lisandro. I don't think Lisandro is playing right. I show speed. 8-0 United. 3-0, I'm guessing you're saying for United, Nasser. Nottingham Forest 1. United. Lingard winner and then his dance. United winning 2-1, penalty saved by Henderson. Oh, that would be huge. Bro, Arsenal versus West Ham tactical preview. Daksh as analyst, here we go. Arey, nahi bhai. That was just not even tactical preview, to be honest. That was just something I found and I thought I'd share it with you guys. I'm not a tactician. Except for the top 2 teams, it's really unpredictable to see who would end up second or third. That's what I like about Premier League. Even though I'm a La Liga fan, it's predictable. I think the variance in the Premier League is a lot more because there is a lot more money. Now you can have a West Ham, if they sell Declan Rice, have 100 million all of a sudden, and they can use that money for a couple of big signings. Yahi hai. Uh, Dean will not play against United. Oh, right, because it's a loan, right? So he won't play against. That's true. That's true. Thank you, Mahesh. Thank you for bringing that point. Yes. 3-0 to United by Aditya. Don't jinx a spot. Arre nahi. I don't think. Yes, no Lisandro. Um, and I should speed. I think no Varane also, right? So it's going to be Magalhaes, right? Maguire and Lindelof. Maguire had a great World Cup as well. So I don't know. I think United should be comfortable winners. I think they have enough quality. I think Rashford will score. I think Bruno will score. I think it'll be a cool, comfortable 2-0 to United. So if there are no more predictions, then finally the final game of the season or final game of the week, Man City and Leeds. What do you guys think? Do you think Leeds can give trouble to City? Because लीड्स को मिड सीजन ब्रेक मिल गया भाई लोगों. लीड्स को मिड सीजन ब्रेक मिल गया, अब वो और कुत्तों की तरह भागेंगे. So a mid season break for Leeds is very important because they play with so much intensity and high pressing, and I don't think many of the players actually went to the World Cup. In fact, I'm not sure who went to the World Cup for Leeds. Um,
So I'm sure Jesse Marsh would be working with this players. I'm sure Jesse Marsh. City 1-0 leads, tough game for City. I think so too, man. I think Haaland will score early in the game. Tyler Adams. अरे एक और भी था ना, Somerville also is playing. Tyler Adams played for USA. I think Somerville will also be very important for Somerville इधर है. Somerville. Who am I missing? Somerville. Premier League. Samuel Somerville, English born player. अरे नहीं. पता नहीं. Okay, Leeds 2-1 City, Somerville winner. Yeah. Hello, Nitin. How are you, man? It's nice to see you on stream. Tyler Adams was in the World Cup. That's true. Okay, so hi Vishal. Good man. Nobody. They are a bunch of idiots. Who are a bunch of idiots, bro? I don't know what you're talking about. I should speed. Hey Vishal, how are you, man? Hope everything's good. And of course, yeah, everyone in the chat. Merry Christmas to you all. Christmas आने वाला है. I hope you have a good Christmas. I hope you have a happy new year as well, and I hope आपका next year is very good for you. Okay, wish Arsenal and City both lose. Guys, I'll tell you one thing. If City lose this, देखो games तो same time पे ही होंगी. If City lose this and we win, 8 points ahead, man. 8 points ahead. Arey, Somerville has scored 2-3 goals. I think some players who were on great form in the Premier League na, before the World Cup, I think they'll still be in good form. I think Almiron will be in decent form. I think Sommer will be in decent form. I think Mitoma will be in decent form. Um, I think Brighton are also, I think, making a couple of signings which are going to be really good. So I think that was all for the predictions. Any changes anyone wants to make? Dutch, hello, brother. Okay, yes. So that was the stream today, guys. Unless you have any comments that you want me to address, we can wrap it up in the next 5 minutes. But again, as we said, yeah. Um, how's the atmosphere during Christmas? What'll I do? Well, my friend, I don't usually celebrate Christmas, but and everything's going to be closed tomorrow. So whatever fun, frolic, musty has to be done will be done today. Tomorrow, I'll probably just be at home, watch a Christmas movie, have some cocoa, have a nice food, cook myself a nice lunch and dinner. उसके बाद और तो कुछ नहीं. Without bias, Saliba or Lisandro. And I'll be honest, Spectre, without bias, I'll say Saliba. Although the difference between them is this very minimal. I prefer Saliba because I think his positioning is very good. I think Lisandro's intensity and tackling are very good. Sorry, Saliba's not positioning. Saliba's interceptions, Saliba's ball control and passing are very good. But so are Lisandro's, man. And I would honestly prefer Saliba. And maybe there's a hint of bias, but as far as I can tell, without bias, I would still prefer Saliba. As United fans, difficult to see anybody win EPL. Can't say Liverpool, City, or Arsenal. That's what, right? I तो shudder to imagine. Imagine, guys. Imagine if all us Arsenal fans, जो भी chat में हैं, if we were constantly getting, I mean, we are being getting fifth, sixth, eights, and ninths, but titles were always decided between Tottenham and Chelsea. I would have stopped watching football, bhai. I have literally no idea how United fans have survived because their city local rivals and also Liverpool, their northwestern rivals, वो ही दोनों टाइटल्स जीत रहे हैं. लिवरपूल चैंपियंस लीग जीत रहा है. यूनाइटेड को आई थिंक डेकेड होने वाला है सिंस द प्रीमियर लीग जीते हुए. That's also huge. It was surprising to see PSG going for Fred for 30 million. I have no idea if that rumor's true or not, but bhai, if that's true, then I don't know, man. City already have plenty of, I think, midfielders, right? Arsenal for the win. Arsenal always for the win. Imagine we won the Premier League and we get to spend a huge amount in the summer. Who you bringing? I think I'll be able to answer that question at the end of January, Renisu. Depends on how the make of our squad is. But if we don't get a midfielder in January, then definitely a midfielder. I would go for a good right back and I'd go for a right winger. A right winger. Yeah.
So next season will be 1 decade. Yeah, that's what I'm saying. What's the update on Mudrik? There is no specific update on Mudrik from the last one, which where the president was like, "Haan, theek hai." But it's all the same thing, man. Positive echoes from journalists, people saying ki bhai, haan, uh, which players have been injected by Unai Emery in the current squad? Um, Saka, Smith Rowe. I don't think and Unai Emery की और कौन सी signing थी? Pepe. That's pretty much it. Kim Min Jae from Napoli and CDM can't rely on Gabriel. नहीं भाई, I don't think. See, Mahesh, okay, I really want to understand, Mahesh, why do you not like Gabriel? Because I really want to understand the perspective of people who don't like Gabriel. I think Gabriel is fantastic. I think he काफी towering है. See, Gabriel, he's not the quickest, and sometimes he has a mistake in him. But I also think, bhai, Gabriel's strong hai. He can go toe to toe with players like Antonio and even, to be honest, Haaland also. I don't know कितना चलेगा वो. He's great at scoring goals. Highest scoring CB in the Premier League abhi, right? Um, Defensively he's solid, man. Or passing uski अच्छी है. Um, I think the problem with Gabriel right now is the same problem that we had with Xhaka was that a lot of things that he does right, we think कि हाँ यार ये तो होना ही था. But his mistakes get highlighted a lot more. So that goal जो उसने मिस टच की वजह से लिवरपूल के अगेंस्ट हमने कंसीड कर लिया था, श्योर. बट डू यू रिमेंबर सेकंड हाफ शुरू होने से पहले, आई थिंक फर्स्ट हाफ के एंड पे ही वाज द फर्देस्ट फॉरवर्ड एंड उसने बॉल को जाने दिया टुवर्ड्स साका टू स्कोर दैट गोल. एंड आई थिंक दैट्स ट्रू. आई शुड स्पीड फॉर एवरीबॉडी. आई थिंक देखो, if you are if you genuinely want to view Arsenal games from an unbiased lens, आई एम नॉट सेइंग आप पूरी पूरी गेम्स देखो. मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ हाइलाइट्स ऑफ ऑल द मैचेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे. स्काई स्पोर्ट्स का चैनल है. दे हैव ऑल द हाइलाइट्स ऑफ ऑल द गेम्स जो स्काई स्पोर्ट्स पे आई थी. उसमें आप आर्सेनल वाले गेम्स देखो एंड यू सी हाउ मेनी टाइम्स सलीबा हैज मेड अ मिस्टेक. बट यू डोंट सी पीपल कॉलिंग आउट सलीबा बिकॉज ही इज अ न्यू साइनिंग. वो एक न्यू टॉय फैसिनेशन होता है. So I think Gabriel gets a little unfairly judged, but of course, everyone is entitled to their opinion, man. Um, so I think, yeah, Gabriel is fine. I think he's fucking fantastic, and उसने contract extension sign किया है. So I trust Gabriel, man. I trust I trust any player who wants to play for this club. Okay, why transfer rumors and tweets are such a waste of time. I've been following them for last 3 years. They are a waste of time because their entire motive is to get you to click them and engage with them and feel something about them. Otherwise, अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो फिर क्या होगा? Okay, Tierney, Gunnar for life. I'm sorry, I don't remember the context. Good to see. Hey, good to see you, Jishan. How are you? Merry Christmas, Happy New Year. Um, Gakpo, Enzo, Felix to United. I think it's possible, but it's also very tough. See, I'll tell you guys something about United. Okay, all the players you mentioned, apart from maybe Felix, United were interested in them a year ago for sure. Gakpo for sure. Enzo for sure. Enzo तो 100%. एंड उस टाइम एंजो आपको रिवर प्लेट से 20 का मिल रहा था. बेनफिका चला गया वो, चलो जो भी है. अब आप उसको लोगे भी, आपको 100 मिलियन के आसपास या 80 मिलियन के आसपास मिलेगा. तो इट्स अ लिटिल स्ट्रेंज. आई मीन, you'll end up spending, if you get all these three players, you end up spending 300 million anyways. So I don't know if ownership पे इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा. Of course, I had that conversation with Mohak bhai also last time on stream. Ownership change से कितना फर्क पड़ेगा. But I think getting all these three is a huge amount of money. And to be honest, I'll be very honest, a huge risk. I'll tell you why. Kai Havertz has higher potential, at least had higher potential at Bayern Leverkusen than all these three players. आप चाहे मानो नहीं मानो, agree करो, disagree करो, that's fine. All of you are entitled to your opinion. Kai Havertz, Timo Werner both had higher ceiling. चलो Timo Werner उतना नहीं. Kai Havertz definitely had a higher ceiling. Sometimes moving leagues does not really translate into success. Now you also have to think, are these players fit for United? Now I think Gakpo is fit for United because Ten Hag style is perfect. Enzo again fits really well. वो एक sort of killer mentality जो लिजांड्रो मार्टिनेज के पास है, Enzo will also bring. João Felix का मेरे को पता नहीं. I don't think João Felix will fit well into the Premier League, but
whoever gets him on loan is very lucky. Don't you think we need both Mudrik and Felix because Felix can play him? I think we do. Um, that is the ideal situation, Nitin. Getting Mudrik and Felix on loan and Mudrik for a permanent is the ideal situation for us in this January. I wish you were United representatives in. I'm guessing you're saying you wish I was a United representative. Nahi, I mean, it was easy to be a United representative when I was in school, but yeah, नहीं होता है मुझसे नहीं होता. I love Arsenal. I love Arsenal. Gabriel is a good defender, but sometimes he makes mistakes. ये तो यार हर चीज के लिए सही है. If it has to happen, it will. It won't. It won't. We don't need to fuss about. And that's true, man. I mean, you don't need to get too much into rumors and get sad. Zinchenko is slightly underrated, I feel. I think Zinchenko is always injured, and I think you can't really rate Zinchenko until he's played at least 30 games in a season, man. I don't think he's played 30 games this season. I don't think he will play 30 games this season. Very difficult to rate him, how he's doing at Arsenal. Migalash is perfect. Game reading, passive centre back like Saliba need aggressive. हाँ यार, I think some जैसे if you okay. By the way, if you're an Arsenal fan or even if you're a football fan, go watch Arteta ka interview with Jamie Carragher. Now the reason I'm asking is काफी interesting insight मिलता है about Pep, about his coaching style, about himself. And then he says something very interesting about Saliba, that center backs are not isolated. Center back is a partnership. And I think maybe in isolation you can say Gabriel is not the best center back and whatever, but with Saliba he just works perfectly, man. And that is what I'm saying. How can you show how good a defender is? By mention his goals. Yeah, I think वही है ना. अब आप सोचो, आजकल के जो कीपर्स है स्पेक्टर, you don't only judge them by how much they shoot. Of course, that is their primary job. How many goals they stop, या उनकी शॉट स्टॉपिंग कैसी है, उनकी किकिंग कितनी अच्छी है. बट आजकल के कीपर्स आर ऑल्सो जज्ड इन हाउ गुड यू आर विद योर फीट. आपकी पासिंग कितनी अच्छी है, आप बॉल्स कितनी कलेक्ट कर लेते हो इन डिफिकल्ट सिचुएशंस. अब इवेंचुअली आई इन्विजन पेनल्टी स्टॉपिंग विल बी अ स्पेशलिस्ट स्किल. जैसे हम देख रहे हैं पेनल्टीज कितनी इंपॉर्टेंट हो रही है स्पेशली इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स. आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ कीपर्स स्टार्ट बिकमिंग पेनल्टी स्पेशलिस्ट एज वेल. सो या अब आप एडरसन को देखो. एडरसन इन नो मोल्ड is a traditional keeper. Edison की stopping is decent, of course. I think Alisson की better है. But Edison की passing, Edison के यार Edison assist दे देता है यार बंदा. तो आई थिंक ये जो ट्रेडिशनल रोल्स ऑफ सेंटर बैक्स, मिडफील्डर्स, गोलकीपर्स, ये सब चेंज होंगे इवेंचुअली, और अभी भी हो ही रहे हैं. अगेन लाइक आई सेड राज, वेरी एक्सपेंसिव. Nervy under pressure, that's why maybe. And that's fair, Vishal. Gabriel is nervy under pressure, but I think that's also a fact that he's what, 23, 24. So let's see, man, let's see. Talk about mistakes, ask Harry Maguire. I think he's also being unfairly targeted. Not to say that he's not a great player. I mean, he is okay. I wouldn't want him in my team, but his mistakes stand out so much more than what he does good. He's amazing in the air. स्लैब हेड किसी कारण से कहते हैं, ऑफ कोर्स मीम है, बट स्लैब हेड किसी कारण से कहते हैं. अब अगर आप इंग्लैंड में देखो, इंग्लैंड डज नॉट प्ले अ हाई लाइन, एटलीस्ट उतनी हाई तो नहीं जितना टेनहाग खेलता है. तो टेनहाग के सिस्टम में ही स्ट्रगल, बट एक इंग्लैंड के सिस्टम ही इज परफेक्टली एक्सेलिंग. सो मे बी इन अ सिस्टम जहाँ पे लाइन उतनी हाई नहीं है, जहाँ पे आप सेंटर बैक्स को उतनी पेस की जरूरत नहीं है, मे बी he'll be decent, who knows. Thanks Mridul. I've noticed in recent games that Gabriel has developed the quality of line-breaking passes, like the direct ball to Martinelli, grounded diagonal passes, but the mistakes need to be reduced. And I think that's fair, Gunnar. If you've noticed Arteta in his first season, he said two things. He said, when we were playing Liverpool, he said, the thing about Liverpool is they're so difficult to press because if you send your players in, it's Van Dijk who throws a diagonal ball to Salah's chest here and they're out. And that is, I think, what we expect from Gabriel. कि वो बंदा साका को, मार्टिनेली को ऐसे डायगोनल पासेस करेगा ताकि टीम्स हमें प्रेस नहीं करेंगी. If you take out pressing as an option, then you can play out from the back, you can get your midfielders involved. So it's
it's very essential for us that Gabriel keeps improving his passing ability, because it changes our game plan, gives us so many options. Um, God of defending Harry Maguire. Is João Felix coming to Arsenal? It seems to be, but we got Gabriel. Amal, the latest is that Arsenal and United are trying a loan for João Felix for 8 million loan fees. This is coming from Duncan Castles, who's usually very reliable for Jorge Mendes clients. Now, if this is just news to inflate the price, to put pressure on some clubs, I don't know. But we'll see. We'll see. अ, ये टिर्नी टोमियासु जिंचेंको की रेगुलर इंजरीज ने परेशान करके रखा है. लिटरली मेड अप ऑफ ग्लास. यार टिर्नी एटलीस्ट इज ओके. टिर्नी एक बार इंजर होता है तो लंबे टाइम के लिए इंजर होता है, बट व्हेन ही इज प्लेइंग. जिंचेंको एंड टोमियासु का मुझे समझ नहीं आ रहा. टोमियासु स्पेशली कीप्स गेटिंग इंजर्ड. जिंचेंको कभी फिट होता ही नहीं है. It's starting to worry me a little bit, man, because we've paid 30 plus million for Zinchenko. Tomiyasu, chalo, we got for cheap, so that's not big an issue. So yeah, let's see, man. Maguire is good, but Manchester United plays, which is what I was saying. Yeah, Amal, exactly. Tierney and Tommy should be sold if their injury records doesn't improve this season. I think this season Zinchenko ka injury record is worse. And I think Tierney, as you can see, if you've seen in the finals and if you've seen in the, sorry, not finals, if you've seen in the friendlies, you see that Tierney is actually inverting a lot more and inverting a little better. So I think Arteta trusts him. And I think Zinchenko is right now the one who's unreliable. Someone needs to stop Haaland, man. Should scoring goals in every match. भाई लिवरपूल के अगेंस्ट उसने जो गोल मारा था, क्या बढ़िया गोल था. एंड या मैन, आई थिंक देखते हैं हालैंड को क्या. हालैंड को I think I will have to read and research about how to stop Erling Haaland. I think there is a couple of videos out there. I'll have to see what they talk. I have to see for myself कि मेरे को क्या लगता है and everything. Lisandro Martinez passing is also very good. Yes, man. Lisandro Martinez is amazing. I think if we bought Lisandro, no, he would have played left back or DM for us. Center back नहीं खेलता हमारे लिए वो. We would have gotten Lisandro Martinez instead of Zinchenko, which honestly, man, would be fucking insane. Hype to see Saliba versus Haaland. I think it will be Saliba and Gabriel versus Haaland, to be honest with you guys. Gabriel ki physicality and Saliba ki positioning. Not to mention that Saliba is also very strong, man. So many times he just shoves people off. But dono ke andar mistakes hai, man. And I think when we play City, at least in one of those games, no, one of these guys, Saliba or Gabriel, will concede a penalty by fouling Haaland. We'll go a little too intense and he'll fall and he'll get a pen. And I have a bad feeling it'll be Saliba. Because Wolves के against भी, अगर आपको याद हो, अगर किसी ने Wolves वाला गेम देखे नहीं देखे तो हाइलाइट्स देख लो. हमने एक सलीबा ने एक बहुत गंदा पुश दिया था गोंसालो गुएडेश को, जो ऑलमोस्ट पेनल्टी हो सकती थी बट नहीं मिली. Maybe Tommy also another season, Tierney surely. Yeah, man. I mean, if any of these three guys keep getting injured, then यार ये तो नहीं चलेगा हमारे साथ. We need players who are available for 30 games a season, man. At least 30 games a season, तो at least minimum expect करना चाहिए. Tommy was injured for a long time last season too. Yeah, man. Mikel Arteta की क्या strategy रहेगी? By the way, Haaland is the next machine. I think Haaland versus Mbappe versus I think a couple more players will be the next sort of generation of players that will play really well. Mikel Arteta की क्या strategy रहेगी against Haaland? Probably to cut service and probably to keep him as away from goal as possible. But that's very difficult considering they have Cancelo, Foden, Mahrez, De Bruyne. ये सारे लोग हालैंड को, बर्नार्डो, ये सारे लोग हालैंड को प्रोवाइड कर सकते हैं. तो आप कितनी कितनी सोर्सेज काटोगे आप टू स्टॉप द बॉल फ्रॉम गेटिंग टू हालैंड? आई डोंट नो, मैन. आई डोंट नो. Yeah, man. De Bruyne is a modern league Premier League legend, man. Amazing player. Hey Tanmay, how are you? Nice to see you here. Yeah, man, that goal, insane first touch. Insane is the right adjective actually. क्या pick out किया यार उसने. Felix आ रहा है क्या आर्सेनल फिर? Any news or Man United? The news is, as I've said, both are trying for a loan. 8 million loan fees hai. Neither of them are ahead, but Duncan Castle says that Arsenal are advanced in their negotiations. अब मुझे नहीं पता what does advanced mean. I think nobody knows. Could be that we've talked to the player and agent. Could be just Edu's like, हाँ हम इसको लोन पे लेंगे.
So that's that. Advanced can be anything, which is why, like somebody already mentioned in the chat, don't ever take Twitter rumors and tweets too seriously. Yes, amazing first touch. Fitness challenge कैसा चल रहा है, bro? Fitness challenge is going good. The good thing is my fat percentage is dropping. My weight is surprisingly not dropping too much. But ठीक है यार, कोई बात नहीं. I think I'll have to focus on diet a little more. And again, सिर्फ फिटनेस 2 हफ्ते की नहीं है, अभी तो फिटनेस चैलेंज 12 अगस्त को 12 दिसंबर को स्टार्ट किया था, अभी तो 12 ही दिन हुए हैं. इट्स ऑल अबाउट कीपिंग इट फॉर 5-6 मंथ्स. सो 5-6 मंथ्स में जो चेंज होगा वो देखेंगे. Haaland is 6'4", so it's impossible. Yeah, that's true, man. Thomas Partey would need to shut down KDB like he did last season. देखते हैं, man. That City game, that'll be a whole ass video about how to stop City, man. How do you stop City? Pedri in Arsenal, take or reject? I'll be honest, Spectre. Javi, Pedri, Ansu, Fed. I've only seen these players play in the Champions League. तो मैं इनके गेम क्वालिटी पे नहीं बता सकता. I won't be like हाँ हाँ ले लो या हाँ हाँ नहीं चाहिए मेरे को without seeing a player play. So I really can't answer that. Um, but it's not like Barcelona to offer any good player. So I'm assuming you don't really like Pedri. पता नहीं भाई. Must be tough addressing the same super chats after every 10 minutes regarding the transfer news. Feel pretty sad. No offense, can understand. No, man. I think that's what conversations are with chats, and I don't think there is any pain in this. Um, this is what we sign up for. This is what I sign up for. Talking to people, and some people have different times. कुछ लोग, I think first minute में आके, I think 10 मिनट में चले गए. अभी भी जैसे मेरा व्यू काउंटर 12 दिख रहा है. एक टाइम पे 20 लोग थे. कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं. Abhi Tanmay has just come in, and I'm sure he might have some questions. Like, for example, he just asked, would you swap Saka for Reece James? I will never swap Saka for Reece James. I would love Reece James at Arsenal, but Reece James, man, what a right back, right wing back, centre back. Amazing, amazing talent. Amazing talent. In Manchester Derby, Varane and Leach are going to stop Haaland for sure. Did you not lose like 6-3 to them? I show speed. यही था ना स्कोर यूनाइटेड एंड सिटी का 6-3 था ना. और वो भी 3 गोल इसलिए पड़े थे क्योंकि सिटी जस्ट स्टॉप्ड. खैर, आई डोंट नो मैन. आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, बट आई हैव वेरी वेरी लिटिल ऑप्टिमिज्म फॉर दिस स्टेटमेंट. Pedri is really good, but his best quality will come out in La Liga only. Why is that, Renisu? I have not seen Pedri play. Felix would be another Sancho. Hot take. I don't think Sancho का Premier League career खत्म हुआ. I think he has too much potential to fail. And I don't say that about many people. I think ना ऑफ कोर्स कुछ भी हो सकता है. आपने देखा डेली एली एट 1.21 साल का इतना बढ़िया प्लेयर था टॉटनहम के लिए. बोल के अजीब लगता है बट था. You have to admit it. And now he's playing in Turkey, getting substituted before 30 minutes. So you never really know. Swap Saka for Dembele, massive W for Arsenal. I don't think so, man. Saka stronger. Saka less injury prone. Dembele, he's good, man. But I think Saka ki trajectory and ceiling is very, very high. Now, I don't know if it's higher than Dembele or whatever it may be. Dono young hai. But what Saka brings to Arsenal, I don't think any other player can bring to Arsenal. Varane got injured, भाई. तो वही है ना, मतलब अब बताओ, एक इंजरी से आप 6 गोल थोड़ी खा लोगे. चलो 2 खा लोगे तो समझ आता है. 6 गोल तो वरान होता भी. I still think you would have lost 3-1 or something. Yes, 6-3 exactly. Pedri good on La Liga. Why so? Yeah, that's what. Reece James is the only player I take from Chelsea without batting an eyelid. Who else? Who else will I take from Chelsea? I used to love Kukureya, but पता नहीं Chelsea में आके उसको क्या हो गया. और keeper नहीं. Mendy is also gone. Kepa is also not okay. Kepa is fine. Thiago Silva, I'd love him, but he's too old. Maybe 2-3 seasons.
दूसरा सेंटर बैक कौन है? क्रिस्टियनसन तो चला गया है। और कौन है चेल्सी के सेंटर बैक्स? चलोबा? ओके, फोफाना, ओके, कुकरेया, उसके बाद लॉफ्टस चीक, माउंट, कांटे, कांटे भी इंजर हो रहा है अब। फॉरवर्ड काय हैवर्ट्स, पता नहीं यार, चेल्सी का बहुत ही वियर्ड है। कोवाचिच, हाँ कोवाचिच इज नाइस, कूलिबाली इज आल्सो, यस यस यस। Manchester United needs a natural striker as Ronnie is out. I think you should just sign Cristiano Ronaldo again. नहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्राइकर, आई थिंक आप लोग स्ट्राइकर्स समर में लेंगे। इस टाइम आप गैकपो लोगे या फिर आप गैकपो को, यार पता नहीं। देखो मोहक भाई की मैंने जितनी स्ट्रीम्स देखी है उसमें मोहक भाई कहते हैं दैट टेन हाग यूजेस विंग्स अ लॉट मोर, सो मे बी यू जस्ट नीड एन इनसाइड फॉरवर्ड रादर देन अ ट्रेडिशनल स्ट्राइकर एज यू से इट, अमाल, बट आई डोंट नो. Mohak bhai can be wrong, you can be wrong, you can just differ on how Ten Hag plays. Again, I don't watch United as passionately as I watch Arsenal, so I can't really comment. Again, man, so that's even worse if 60 minutes, 30 minutes खेला उसने, 30 मिनट से पहले भी सिटी ने आई थिंक गोल मार ही दिया था। खैर जो भी है यार, इन चीज़ों पे तो मत करो। Once upon a time, Dele Alli had been linked with Real Madrid. True, true. Just getting a feeling Pedri's best form in La Liga because La Liga needs more technical skill than physicality. Maybe, maybe. What was the reason for Dele Alli's downfall? If you've watched All or Nothing Tottenham, you will see Jose Mourinho tell Dele Alli. There is a beautiful sequence actually where he says, "Yesterday I was 20, today I am 56." And he told Dele, "I don't want you to be the man of the match. I don't expect you to score a goal every match. I just want you to work hard because I feel that tomorrow when you look back, you will have a lot of regret." And then काफ़ी सारे ट्रेनिंग एंड टैक्टिकल सेशंस में भी ही कॉल्ड डेली एली वेरी लेजी, बट आई थिंक यार it could be a host of factors, Tanmay, to be honest. It could be, let's not always forget, mental health is a huge thing, right? Sometimes players just physically decline. काफ़ी सारे प्लेयर्स की हाई पोटेंशियल होते हैं, they just decline. um and sometimes they just lose interest. Now he posted an Instagram post today which said, you saved me, that's why I love you. And he was holding a football, which is basically him saying, Ki, I love football. I'll always love football because it saved me. So I think, yeah, uska, I think decline has to be just mental health, or sometimes this players just decline, man. Sometimes उनकी वो इतनी जल्दी राइज करके इतनी जल्दी फॉल हो ही जाता है, दैट्स ऑल. अगर अब आप पुलिसिच को देख लो, पुलिसिच डॉर्टमुंड में इतना हाईली रेटेड था, बिलीव नहीं कर पाओगे. और चेल्सी आके उसका ट्रैजेक्टरी इतना कम हो गया है. नाउ चेल्सी फैंस आल्सो डोंट रेट हिम, अदर पीपल डोंट रेट हिम. उसका मजाक टाइप बन गया है. उसकी बहुत हाई सीलिंग थी क्रिस्टियन पुलिसिच की. आपको यकीन नहीं होगा, व्हेन चेल्सी साइंड, इफ यू फाइंड एनी ट्विटर पोस्ट और रेडिट पोस्ट और कहीं का भी पोस्ट वेयर पुलिसिच साइंड फॉर चेल्सी, आप कमेंट्स देखना. बेस्ट यंग प्लेयर इन द लीग, ही विल डोमिनेट द प्रीमियर लीग इन द नेक्स्ट 5 years 6 years, जो भी था मतलब. तो काफी टाइम हो जाता है कि प्लेयर्स जस्ट डिक्लाइन. लेजेंडरी मलंग सार, ऑफ कोर्स भाई, मलंग सार, अरे उससे भी लेजेंडरी भाई, बाबा रहमान, बाबा रहमान. Pulisic and Hakim Ziyech. Okay, it was the start of the season. Good things take time. ETH needs to implement style. Plus, Casemiro was not playing in that big game. Yeah, see, I'm not saying that City can't be beaten by United. In fact, I told Mohak Bhai also in the last stream that I would love for United to beat City because it gives us a better chance to win the title. But I think City is this juggernaut, man. And अगर आपने उनका लिवरपूल वाला गेम नहीं देखे तो आप देखो, क्या टीम है यार सिटी, मतलब Do you want Felix? Of course, I do. I don't know if it will work, but I want him. Today I am 56, yesterday I was 20. Yes, exactly. मेसी की रैमोस की संगति में कितना अग्रेसिव हो गए. That is true. Mourinho Dele Alli moment is so pure. Looked like a father-son relationship. I just love Mourinho. What he brings to the team is unparalleled. And the thing with Mourinho is, अगर आप लोग, if any of you work, now if you don't work, if you're a student in school or college or whatever, some professors, some teachers, some bosses are a perfect fit for you. For example, for me,
I don't like somebody who micromanages everything, but I also don't want somebody who's completely aloof. मुझे the best way I work is I should be given monthly targets or bi-weekly targets, मतलब bi-monthly targets कि महीने में एक या दो बार you have to achieve something, and that what keeps me motivated. Some people like to be constantly micromanaged and motivated, and there's nothing wrong in that. And some people don't like to be disturbed. मैं खुद कर लूंगा, आपने मुझसे मांगा, आप मुझ पे छोड़ दो, मैं कैसे करूंगा, right? I am somewhere in the middle. And that's the same with Mourinho. Mourinho ki motivation techniques is he will shame you, he will drop truth bombs, he will be very curt and blunt. Versus um, somebody like at least Unai Emery in the past, who just or Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer is the best example. Very hands off, very happy, tries to keep everyone happy. Um, and sometimes that works. You would see the best versions of some players under Ole Gunnar Solskjaer, and wahi players under different managers fail. You will see some players horrible under Ole Gunnar Solskjaer and some players amazing outside of him. So all of this matters a lot कि यार डेली एली को कैसी मोटिवेशन चाहिए. मे बी मोरिनियो वाली मोटिवेशन नहीं चली. So yeah, uh, my gut feeling for this season, Arsenal will win the EPL, Manchester will finish third. Which Manchester? Acha. United will finish third. City will finish second. Newcastle will top four. So you're saying Chelsea, Tottenham, and Spurs will be outside top four. Hmm. I think Liverpool will come top four. मेरे को genuine feeling आ रहा है. They will buck up. I think Van Dijk will Van Dijk now. 2019 sold Musiala for $500,000 to Bayern. 2020 bought Havertz for 72 million. Wait, Musiala. Acha, हाँ, Musiala was really? Huh. Ali, same case with Marshall, is better than Rashford, but Marshall doesn't want to work hard. Marshall is lazy. I don't know, man. Like I said, I don't follow United that passionately. I've heard this rumor that Marshall is actually lazy. I don't know how much I actually believe in it. Why Mourinho used to fight with Arsene? Arsene Lafra. Huh. I think they just did not like each other. Like I said, they had very contrasting personalities. Arsene Wenger was an aesthetic manager. He wanted football to look beautiful because he thought that was the right way to win, even if it takes time. Mourinho was a results based manager. Mourinho was like, जीतना है तो जीतना है. मैं किसी भी तरह चाहूँ, मैं को जीतना है. And Mourinho said Arsene Wenger is a specialist in failure. Wenger said कि भाई Mourinho के बारे में कुछ बोल दिया. बहुत बहुत चीजें हुई. But I think it's mostly that they were contrasting personalities. Alex Ferguson is disappointed, but Man City काफी ज़्यादा 2009-11 vibes दे रही है. I don't think so. I think 2009-11 Barca was a whole different level. I don't think that can be replicated. वरना कितनी सारी टीम्स कर लेती यार. ये सिटी टीम ही कर लेती. आई डोंट थिंक दे गिविंग. वो बारसा टीम वाज समथिंग एल्स मैन. नहीं. If PSG wins the Champions League with Mbappe being top scorer for them, then who do you think Ballon d'Or? I think Ballon d'Or will be Messi. I think it's already decided. Plus, that would mean Messi is also won Champions League, no? So I think Messi will win. Sorry, yeah, Messi is Ballon d'Or. Plus, yeah, वो romantic, अगर आप देखो, story he is too good to be true to not give the Ballon d'Or to Messi. Ask me, I can tell I manage a team. हाँ यार, if you're a manager or if you're an employee who's working under a manager, I mean, all employees have some manager at least. Or if you're a student with a professor, you'll know कि कैसी personality रहती है. Yeah, on the Mourinho one, yeah, man, exactly. Thank you so much, Mridul. Hey, Harshantanu, how are you? Nice to see you here. Riz got Daksh, Ole is handsome. यार एक ऑनेस्टली मेरे को बताओ व्हाट इज रिज. आई हैव बीन सीइंग दिस अ लॉट. डब्ल्यू रिज, वी रिज, एल रिज. आई नो किसी रैपर ने बोला था, बट व्हाट इज एग्जैक्टली रिज आई हैव नो आइडिया. We are going for Joe Felix. Man, what is Edu cooking now? If that gets done, trying at Yuri Tillemans' window transfer for Locatelli. Let's see. Let's see what happens, man. There's so many names floating around. Locatelli, Vlahovic, Mudrik, Felix. I don't know. Let's see.
Liverpool would be back. Yes, I think so, man. Aditya, I agree. Okay. Exactly. Arsenal, City, Liverpool, United are top four according to me. I think that would be my top four as well. I think Chelsea will fight with United, and I think United will clinch it. And if this is the order of the Premier League, I think as Arsenal fans, we can be very happy. This winning the Premier League is huge for Arsenal because we can attract so many good players after this, guys. Riz, another word for spitting him. How good are you with pulling? Oh, okay. Fair enough. Thanks, Renisu. I am too old for this now. Musiala was in Cobham for 8 years. Bhai, Cobham, what an academy, man. What an academy. The only academy, I think, nahi, it's the best academy. I love Hayland. United के academy का क्या नाम है? Do you call it Carrington or what? Carrington's your training ground, right? Or do you just call it the United Academy or something? हाँ भाई, ये I've seen he's overweight, which is I think it'll anger Pep a lot, man. बंदा इन्हें खेला नहीं है. बंदा आई थिंक ट्रेन भी कर रहा होगा इंग्लैंड टीम के साथ. वो he's returned overweight. I don't know what's happened. Yeah, something's gone massively wrong there, man. What is Cobham? Cobham is हमारा जैसे आर्सेनल का हेलैंड होता है ना, our training academy. वैसे ही Cobham is Chelsea's academy. Rappers objectifying women, so don't छोड़ दो यार. I just don't want to get into that. Yuri Tielemans is good with the ball but too slow. Don't want him at Arsenal. And especially if you're getting him for an Partey replacement, I don't think he can do what Partey does. He can do what Xhaka does, getting forward, but Xhaka defend भी करता है यार. तो काफी यूनिक प्लेयर चाहिए हमें इन दोनों पोजीशंस के लिए. Like a Calvin Phillips, to be honest, or a Declan Rice, और कौन, like even a Leandro Paredes, although Paredes का वर्ल्ड कप पे देख के I think we're just getting another Shaka, a younger Shaka who's angry all the time. Bhai, love your videos from a City fan. I'm guessing that's what you wanted to say. Thank you, Priyanshu. Love to hear that. Thank you so much. It's going to be a huge second half of the season for both our teams. You especially, of course, champions chasing another title, and of course Arsenal challenging City. Felix Ogakpo, who would Arsenal prefer? Who would Arsenal prefer? I would say Arsenal would prefer. I think Gakpo. I think Gakpo will prefer. He is in that Mudryk Martinelli mold, and he'll eventually be a striker. I think we'll prefer Gakpo, but I think Ten Hag will get Gakpo before us. 100%, 100%. Okay, guys. I don't see any more comments, which is okay, fine, good. But yeah, that was our stream today. Wrap up करें, unless आपके पास कुछ और है पूछने के लिए. Yeah. That's why I was thinking, भाई. Exactly why Paradise came to my head. Juventus वाले काफी players होंगे. How much minimum money West Ham wants for rice? Basmati rice 3 euro का मिलता है भाई. नहीं, 3 euro बहुत कम है. Gakpo to United, nowhere else. हाँ, 100%, 100%. United's youngsters are too good. Garnacho, Iqbal, अरे और भी थे यार. Hannibal, Mebry, और कौन था उनका. But the thing is, no, United का कब young talents की कमी है. Rashford आप देख ही रहे हो. Gakpo भी आ जाएगा, इकबाल भी आ जाएगा, गर्नाचो है ही है. आपको यू मस्ट रिमेम्बर फेडरिको मकेडा, याद है किसी को? क्या क्या सीन पे आया था फेडरिको मकेडा. एंड देन आदनान जानूसाई था ना उसका नाम, वो भी. अमाद डियालो ऑफ कोर्स was so good. Apart from his court case, Mason Greenwood, another great youngster. United में कभी भी good youngsters की कमी रही नहीं है, to be honest. But with Ten Hag, I think these youngsters are another level, especially if Ten Hag is getting them from Ajax in the Dutch league. Do you think Dushan can perform in the EPL? I think he can. I don't know if he will, but I think he can. Strong है बंदा, fast है, finishing भी अच्छी है. I would have loved to see him at Arsenal, but उसने reject कर दिया. Now, I am not somebody who's salty about it, but as Mikel said, if you have to convince them multiple times to join a club like Arsenal, then they're not worth it. सब छोड़ दीजिए, क्या करना है फिर करने का. ये इधर इतना weird क्यों हो जाता है?
फोकस ही इतना वियर्ड है दोनों साइड पे. ओके. Which DM would be the best for Chelsea? अगर आपने देखा हो, आई थिंक चेल्सी could do a few years with Amrabat, जो मोरक्को के लिए खेला है. That would be good. You can also go for Unahi, but looks like Unahi is going to Unahi center CDM ही है ना? Unahi, हाँ, Azedin Unahi. Um, he is प्रोफाइल क्या है इसकी भाई बंदे की? सेंट्रल मिडफील्ड, यस. सो Azedin Unahi and Caicedo, जैसे किसी ने कहा है. Um, it'll be so funny if they actually get fucking क्या नाम है उसका जो ने ब्राइटन को बेचा है अपना, बिली गिलमोर. Be so funny if they pay again for Billy Gilmore. Rise to Chelsea, yes, that's what I also think. I also think मेरे को पता नहीं क्यों, I don't know why, I always can only imagine Enzo at Chelsea. पता नहीं क्यों. I don't know if he'll go to United or what, or Liverpool या जहाँ से भी उसके एग्रीमेंट है, बट मुझे तो हमेशा लगता है. चलो भाई, टेक योर लीव, मेरी क्रिसमस, उधर फेस्टिव सीजन देखकर घर की याद जरूर आएगी. ऑफ कोर्स मैन, ऑफ कोर्स. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. कम ऑन यू गनर्स, कम ऑन यू गनर्स माय फ्रेंड, कम ऑन यू गनर्स. Arsenal needs a former. Yes, we've talked about this at length, at detail, that we cannot go into this season with just Eddie Nketiah and challenge for the title. Yo, good evening, Born from the Flames. How are you, my friend? Good talking to you on Instagram anyway. What's your thoughts on Denzel Dumfries to Man United? Is that a genuine rumor? सारे डच प्लेयर जा रहे हैं क्या यूनाइटेड अब सारे? अरे वाह, मजे आ गए. He's not an 8. Oh, sorry, he's not a CDM. He's more of an advanced 8. Let's see, man. You're right in that sense, but so is Loftus Cheek. So was Kovacic, to be honest. I think अगर जॉर्जिनियो, कोवाचिच और कांटे ऐसे खेलते, अगर आपको सीडीएम चाहिए तो हाँ, सीडीएम तो फिर आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. Ten Hag gives more chances to youngsters than Ole. I don't think that's necessarily true, right? I think Ole ने काफी young players को chances दिए थे. Maybe not. I don't know. I think Ten Hag, देखो, अब तो आप रीबिल्ड पे जा रहे हो, तो आपके पास रीबिल्ड करना है, तो आपको तो यंग प्लेयर्स को देना ही होंगे चांसेस. आप अब नहीं दोगे तो कब दोगे? अब आर्सेनल की फिलॉसफी में हमने सिर्फ विलियन हु वाज 30 ईयर ओल्ड साइन किया. उसके अलावा बेन वाइट, राम्सडेल, साका, मार्टिनेली, स्मिथ रो, मार्किनियोस, ये सारे प्लेयर्स जो इतने यंग ही तो हैं. फाबियो वियरा. तो यार रीबिल्ड का यही होता है. एंड इफ वी विन दिस टाइटल, देन आपको दिख जाएगा कि रीबिल्डिंग इज द राइट वे, एंड रीबिल्डिंग विद यंगस्टर्स एंड गिविंग द मैनेजर टाइम इज द राइट वे टू गो अबाउट फुटबॉल. Enzo will be unreal. Yeah, man. I think Enzo will be unreal. But like I said earlier, sometimes World Cup form does not translate into club form, especially in a big league. Chucky Lozano को आप देख लो, सीरिया में वो, he's been hot and cold. Let's put it that way. Enzo to City, you say A3. Merry Christmas, Priyanshu bhai. Merry Christmas and Happy New Year to you. I will do unspeakable things for Enzo to Arsenal. I think everyone would, but I don't think that's happening. Arteta better than Ten Hag? No, man. I mean, how can you compare two people right like this, right? There are certain criteria. For example, Ten Hag is definitely more successful than Arteta. So in that sense, yes, he is better. Um, Arteta, I think, is a better motivator than Ten Hag, or a better man manager. Ten Hag is better than other things, तो पता नहीं. Sorry भाई, एक एग्जाम था इसलिए नहीं कर सकता था. कोई बात नहीं भाई. Bro, no problem at all. No problem at all. Rumer, I have no idea. Will you take FDJ or Enzo? Out of these two, FDJ. Nkunku, that's done to Chelsea, right? Ayan, it's too early to judge Arteta better than Ten Hag. हाँ यार, I think it's 3 years in management, man. You give him at least 4-5 years and let's see how much he wins. So देखते हैं. But I hope, Born from the Flames, your exam went well. Okay, guys, I think we'll wrap up the stream. अब 2 घंटे हो गए हैं. 2 घंटे हमने प्रीमियर लीग के प्रीव्यू कर लिया है, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल ऑफ दिस. अगेन, जस्ट फॉर यू गाइस, मैं जल्दी से आपको फिक्सचर्स दिखा देता हूँ दोबारा. माय थॉट्स ऑन Nkunku to Chelsea. I'll be very cautious, Tanmay, simply because you had Kai Havertz who's failed at Chelsea, okay? And I think Kai Havertz has higher potential than Nkunku. Um, so I don't know, but
again, you can't really say anything about the future. I hope it turns out well for Chelsea, but not too well. But not too well. Okay, last time Brentford Tottenham. We all want Brentford to win. Let's be honest. And guys, if you haven't liked the video, please video ko like kar do. If you like the video, then Tottenham will lose, and we all can have a nice laugh about it. Brighton Southampton. I think everyone's expecting Brighton to win, especially हासन उटल के sack होने के बाद. I don't know उनका नया manager कौन है, क्या scene है. Newcastle, I think, will continue. They've won 5 games in a row, and I think they'll win their sixth on Monday. Same with, I think, इस गेम में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, but I think Fulham will win this. I want Vieira's team to win, but Fulham जीत जाएगी. I don't care about this game, and I think this game it'll be very interesting. Although I expect Liverpool to resume how they've been going in the past few years, but Unai Emery hai. Unai Emery has not had a good record against Klopp and Liverpool. But let's see, man. This could be a new Unai Emery. He's already beaten United. Could beat Liverpool again. Arsenal versus West Ham again, guys. No, मैं तो इस पे trolls भी नहीं लूंगा. Arsenal has to win this game. We've been 5 points clear of him, of City, and I think City will beat Leeds, so we'll have to keep that gap. We cannot lose against West Ham. Enketia के लिए बहुत important game होगा because he'll have this opportunity to show that I can lead the line for at least a few more weeks. Chelsea Bournemouth. Some people said Bournemouth to win, but let's be honest. I think Chelsea is the one who will get this. Chelsea has to win this. Because, well, to be honest, they have to kickstart the season again, and I think this maybe United will win quite comfortably. This will be a difficult game for City, but I think they'll eke out a pretty nice win for themselves. And let's be honest, एक बार वापस टेबल देख लेते हैं. Top 4 में Newcastle is a very interesting choice. Arsenal, of course, top of the league, 5 points clear, and 7 points clear of Newcastle with a game less played. Tottenham 4th pe hai, but I don't think they'll be staying in the top 4 for long. I think United and Liverpool will be pushing them. And like I said, guys, Chelsea have no wins in the last 5 games. So they really need to kickstart their season. And yeah, man, that is pretty much the Premier League weekend, bhai. Unai Emery loves big games. Yes, he does. आप कब से सपोर्ट कर रहे हो आर्सेनल को? अब हो जाएंगे आई थिंक 23 years. Havertz really failed in Chelsea, made them UCL, but that's just one moment, right? Like, in that ways, yes, you can say he made them the UCL winner, but he's not been. I just think Kai Havertz is not playing to his maximum potential. That's all. That is all I'll say. Okay, guys, हो गया है stream khatam, and now I will end it. Thank you so much for coming again. If you haven't liked the video, like it. If you're not a subscriber and you've just come onto this live, then please subscribe to this channel. It'll mean a lot. And after the stream ends, maybe leave a comment and let me know what you thought about it. Let me know your predictions. Are you going to do watch alongs? I'm not sure, man. I think I'll put a community post and I'll see what you guys vote, and then maybe I'll put maybe I'll do a watch along. But I just want to also just chill and enjoy Arsenal. I'm a very emotional person, and sometimes when Arsenal doesn't play well, I get overly emotional and lose my cool, which I don't want. तो पहले देखते हैं यार. Let me just see, at least not this game. Maybe I think I'll watch the Brighton game. But anyways, thank you so much, guys. Renisu, one day we'll do a fan stream and I'll give you the link and you can come on. The problem with Renisu, I'll tell you one thing before I go. The problem with the fan stream is आपको पता नहीं आप किसको बुला रहे हो. एंड अगर कोई खुराफाती इंसान निकल गया ना, जिसने ऑन स्क्रीन पॉर्न प्ले कर दिया या कुछ और गलत कर दिया या कुछ कॉपीराइटेड म्यूजिक चला दिया, आपका चैनल चला जाएगा. एंड आई थिंक ये अंकित भाई के साथ ऑलमोस्ट हुआ है, राइट? आई डोंट नो किसी के साथ. आई थिंक ऑलमाइटी ब्लूज के साथ हुआ है ये, वेयर ही गॉट समबडी एंड समबडी डिड सम स्टूपिड शिट एंड हिज चैनल गॉट ब्लॉक्ड फॉर अ व्हाइल एंड देन फाइनली आ गया. बट करेंगे. लेट मी टॉक टू यू गाइज, लेट मी गेट टू नो यू गाइज अ लिटिल मोर. उसके बाद विल डू अ नाइस फैन स्ट्रीम ऑल्सो, मे बी पोस्ट अ गेम और इंटरनेशनल ब्रेक से पहले, just to watch along. Yes, अंकित भैया को हुआ था. वॉच along मैन, 2 घंटे. ओके, चलो देखते हैं. मे बी इट्स गुड.
व्यूइंग बढ़ेगी, काफ़ी अच्छा होगा, टाइम भी निकल जाएगा। हाँ, ठीक है। चलो, I'll put a community post anyway. Let's see how many of you, I think you guys want me to do a watch along anyway. I'll take a decision. But 80% yes, it'll probably happen. चलो, thank you guys. Discord पे कर लेना बात, या फिर वो Discord को इसके साथ सेटअप करो। Anyways, thank you so much guys. And see you again. Good luck to your teams, but better luck to my team, because it's the Arsenal. We're the best club in the world. Come on, you Gunners.